बघा झालं का? Check one, check. Mic testing, check two. A very good morning. Can I request everybody to please get settled down? जैसे मैंने पहले कहा था कि 11:30 sharp we'll start as the live streaming has already started. Yes. So can I request everybody to please get settled down? Okay. Well, मैंने ये कहीं सुना था. God couldn't be everywhere. That is why He made sure that there are mothers everywhere. A very, very hearty Mother's Day to every mother sitting here and every mother out there who's watching this stream. So, if you write mom on a sheet of page, or अगर आप वो upside down कर देंगे, then it becomes wow. Ma is a feeling, it's just not a word. Ma, mother, mom, it's a very, very big feeling for everybody here. Do you agree? Does everybody agree? Yes? Yes. So let's show some energy और एक बहुत बड़ा round of applause for everybody present here on this special day, wishing Mother's Day. Thank you so much. Once again, a very good morning and a hearty welcome on behalf of Sahyadri Hospital. I, Jinal Doshi, welcomes all of you because this is one of the most important days for us where we are launching and unveiling a very important concept where we are looking forward to give a healthier place to each woman here. Well, it's 8th of May 2022 and it's an unveiling of the Momstory. The logo. As we start, once again, like I said, हम रोज हमारी mothers को प्यार दिखाते हैं, प्यार जताते हैं, care, respect. But today it's a moment थोड़ा सा और ज़्यादा उन्हें special feel करवाएं because वो रोज हमारे लिए वही routine से वही efforts देते हैं जिसके लिए हमने कभी उनसे पूछा भी नहीं है और जो हमने कभी मांगा भी नहीं है, but वो हमेशा वही चीज़ वही रूटीन में करते हैं और पूरे लगन से करते हैं. तो आज उन सभी माँस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है, लेकिन उसके साथ साथ a very big salute to all the obstetric and gynecologists sitting here watching the video and every gynac in the world. Because every mom is living up to her dream of having a child because of all your efforts, all your dreams, all your experience and the hard work. Does every gynac and obstetricians agree to this? Yes, yes, because you have made sure that that particular woman, that particular lady lives up to her dream. Well, now quickly, starting the show. So, what is mother? Can anybody answer this? What is mother? Sorry, little louder. Okay, she's the world. Anybody else? Okay. Well, I agree to you, ma'am. She's the world, she's the universe. Does everybody agree to this? Yes. Well, nothing truly comes close to a mother's love. Through her journey of womanhood, a woman goes through various stages of physical, mental, and emotional changes. Right from the birth up until puberty and menopause, each stage brings a multitude of changes in a woman's life. And of all these stages, probably the most glorious stage is that of the pregnancy and motherhood. Right from the uncertain first semester to the challenging third one and the beautiful, yet overwhelming moments of childbirth. Every pregnancy is unique and experience of its own. These experiences weave beautiful, unique stories of womanhood, and in order to help hundreds of women in writing their own special stories on their on this Mother's Day, Sahyadri Hospital presents to you Momstory, a complete health and wellness center of woman and child. Let's have a round of applause for the Momstory. Yes. Like
every other special function and like following all our rituals, I request our dignitaries to please come up on the stage for lamp lighting. I request Dr. Supriya Puranik ma'am, Dr. Pradeep Suryavanshi sir, Dr. Vaishali Chauhan ma'am, Dr. Aarti Rapol, and our CEO, Dr. Abrali Dalal sir, to please everybody come up on the dais for lamp lighting and officially to start the show. I also request Dr. Prasad Muglikar sir to please come up on the dais. On this special day of Mother's Day, launching and unveiling the logo of Momstory, a unique concept. Let's have a round of applause and officially starting with the Momstory. Let's have a round of applause again. All the dignitaries are requested to please wait on the stage as there will be a logo unveiling, the digital logo unveiling. Are we all ready? Are we all ready? So how many of you know what is the concept of Momstory? Any idea, any guesses that you have? Okay, I give you a few seconds to think for it. Let's see how many of you try and guess somewhere close to the concept that is already present here. So everybody is ready. Can we have a huge round of applause when the logo is going to be displayed? On the count of 3, 2, 1, on the screen. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ladies and gentlemen, please pay attention on the screen. Sahyadri Hospital presents Sahyadri Hospital presents Momstory, IVF, maternity, gynecology and childcare. Right here. Once again, a very big round of applause for Sahyadri Hospital and all the dignitaries to coming up with a new concept. Thank you so much. I request all the dignitaries to please take your seat. Okay, coming down to the main question again. आप में से कितनों को पता है या कोई guesses है what is Momstory? What is the concept? आप में से कईयों ने testimonials भी दिए हैं at the end of the hall. तो आप मैंने कईयों को सुना था बोलते वक्त कि what they already have an idea. Anybody would like to share your guesses here? Okay. Without taking much of your time, Momstory has been conceived to help every woman write their unique and beautiful story with a whole lot of love, care and support from us at Sahyadri Hospital. Together, let's make this world a healthier place for all the women out there. Well, everybody, ladies and gentlemen, all the respected guests, I request you to please pay attention on the screen because here is unveiling the main concept of what is Momstory. AV, please.
Okay. Now moving on to another AV of a very special person. This AV is also very special because this AV is about a very talented. Well, not talking much about, just giving a small introduction. Last glimmer of hope for people who have lost all their hopes of conceiving a child. The best infertility expert in Pune. Everybody, again, please pay attention on the screen because this special AV is on Dr. Supriya Puranik. Let's have a round of applause. 20 मई 2009 शुक्रवार की एक खूबसूरत दोपहर थी जब श्रीमती सुमन एक विशाल ऑडिटोरियम में बैठी थी जहां एक अनाउंसमेंट हुआ और अब इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में बेस्ट हेल्थ केयर योगदान देने के लिए अवार्ड दिया जाता है डायनामिक पर्सनालिटी और हाईली क्वालिफाइड ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक को एज द बेस्ट हेल्थ केयर कॉन्ट्रीब्यूटर इन द फील्ड ऑफ इनफर्टिलिटी। श्रीमती सुमन भोसले के लिए ये एक बहुत ही बड़ा दिन था जब महिलाओं के स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उनकी बेटी के काम की सराहना की जा रही थी। डॉक्टर पुराणिक, जिन्होंने सातारा जिले में पहला IVF किया था, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं में उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। आज महिला स्वास्थ्य शिक्षा के लिए समर्पित उनके YouTube प्लेटफॉर्म पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और यह अपने आप में किसी खास उपलब्धि से कम नहीं है। जैसे ही श्रीमती भोसले ने प्रेजेंटर को उनकी बेटी का नाम लेते हुए सुना, उनकी लरजती आंखों से आंसू बहने लगे और उनका दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। उस वक्त उन्हें 50 साल पुराना वो पल याद आ गया जब वो दुखी मन से अपना अबॉर्शन करवाने के लिए अपने डॉक्टर के सामने बैठी थी। उस वक्त उनके पेट में केवल 2.5 महीने का गर्भ था और उस जमाने में MTP कानून भी नहीं बना था। उस समय उनकी डॉक्टर ने उन्हें क्विनाइन की 10-15 गोलियां दी। यूं तो ये गोलियां एंटी मलेरियल ड्रग थी, पर ऐसा माना जाता था कि उनसे गर्भपात भी हो जाता है। वो अपने घर वापस आई और भारी मन से वो गोलियां खा ली। उन्होंने कच्चा पपीता, अनानास आदि फल भी खाए क्योंकि उन्हें बताया गया था कि इन फलों को खाने से भी अबॉर्शन जल्दी हो जाता है। 3 दिन गुजर गए पर उन गोलियों का कोई असर ही नहीं दिखाई दिया क्योंकि उन्हें रक्तस्राव भी नहीं हुआ था। श्रीमती सुमन ने अपना बच्चा गिराने के लिए और भी कई घरेलू नुस्खे आजमाए लेकिन उनका कोई भी फायदा नहीं हुआ, तो आखिरकार उन्हें जबरन अपना गर्भ रखना पड़ा। श्रीमती सुमन को जिस दिन प्रसव पीड़ा शुरू हुई उस दिन सर्वपितृ अमावस्या थी और साथ ही सूर्य ग्रहण भी था। इन दोनों ही दिनों को हिंदू धर्म में किसी भी अच्छे कार्य या बच्चे के जन्म के लिए शुभ नहीं माना जाता है। अमावस्या के उस दिन श्रीमती सुमन ने अपनी अनचाही बच्ची पीयू को जन्म दिया। श्रीमती सुमन बहुत ही डरी हुई थी कि एक अशुभ दिन पैदा हुई उस बच्ची का भाग्य और भविष्य पता नहीं कैसा होगा। उस माँ के डरे हुए मन को ये कहाँ पता था कि उसकी ये बच्ची बहुतों के लिए वरदान साबित होने वाली है। आज उसी बच्ची पीयू को हम सब डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी शानदार उपलब्धियों में बनकर न सिर्फ अपनी माँ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है बल्कि अनेकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। उनकी माँ आज भी भगवान का धन्यवाद करती है कि उन्होंने समय रहते पीयू को बचा लिया। उनका यकीन और भी पक्का हो गया कि दुनिया में चमत्कार होते हैं और उनकी बेटी पीयू यानी डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक इसका जीता जागता उदाहरण है जो आज अपने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के जरिए अनगिनत नई माताओं के लिए उनकी मातृत्व की यात्रा में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। अपने आसपास तालियों की गड़गड़ाहट से श्रीमती सुमन वर्तमान में लौट आई। डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक के साथ उन्हें भी यह सम्मान प्राप्त करने के लिए स्टेज पर बुलाया गया। उस पर उन्हें कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक की गौरवशाली मां के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ है। इसी के साथ ये भी साबित होता है कि एक खास बच्चा बनी बनाई आस्थाओं, अंधविश्वासों और धारणाओं को ललकार कर उनके सामने खड़ा हो सकता है और हर चुनौती को पार कर सकता है। यह केवल डॉक्टर पुराणिक की सच्ची कहानी नहीं बल्कि अनेकों ऐसी महिलाओं की कहानी है
जो हर मुश्किल पार करके आज सफलता के शिखर पर है। यह एक माँ की ममता की कहानी है, जिसने अपने बच्चे का पालन पोषण किया, एक ऐसी बेटी को बड़ा किया जिसके अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा था, और उसे इस तरह से बड़ा किया कि वह उम्मीद छोड़ चुकी अनगिनत महिलाओं जो इनफर्टिलिटी और ऐसे ही अन्य कई सामाजिक समस्याओं से लड़ रही है, उनके लिए एक आशा की किरण बन सके और उनकी अधूरी कहानी को एक नए सिरे से लिखने में उनकी मदद कर सके, बिल्कुल अपनी स्वयं की कहानी की तरह। Let's have a huge round of applause for Dr. Supriya ma'am. मैम मुझे थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ आई थी, she gave me a little brief on this video. लेकिन मुझे ये नहीं पता था मैम, this is your personal video मैम. It's really great and it's a proud moment for all of us sitting here. Don't you all agree? Yes, yes. But this is just one part. ये सिर्फ एक हिस्सा है कहानी का. हम सब दूसरा हिस्सा भी सुनना चाहेंगे, correct? Yes. और दूसरा हिस्सा सुनाने के लिए मैं खुद मैम को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी. To all of you, let's give a round of applause for Dr. Supriya ma'am to please come up on the dais ताकि आप अपना अगला यानी the next part आप हमारे सामने share कर सकें. Can we have the mic please? The cordless mic. Hello. Thank you very much. Yes, आज ये फिल्म देखी और इतना भी गौर से मैंने नहीं देखी थी, जिस स्क्रिप्ट पढ़ी थी. ये कहानी में हमारी मॉम थोड़ी विलन बन रही है. मॉम सॉरी, तू देखती रहे, मॉम है लेकिन शी इज नॉट हियर, वो देखती रहेगी शायद प्रोग्राम. आप विलन नहीं हो. उस कंडीशन, वो कंडीशन ही ऐसी थी कि उसको वो स्टेप करवानी पड़ी, लेनी पड़ी. मेरी बड़ी बहन 11 सितंबर को डिलीवर हो गई और दिसंबर जैन में उसे पता चला, मेरी मॉम को पता चला वो फिर से प्रेग्नेंट है. 4-5 महीने की बच्ची, स्तनपान लेते हुए बच्ची. कोई भी मॉम इस जनरेशन की या वो जनरेशन की डेफिनेटली तो कहेगी कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, राइट? मॉमीज, 4 महीने का बेबी आपके पास है, 5 महीने का, और आपको वापस से न्यूज़ मिली है आप माँ बनने वाली हो. आपको कैसा फील होगा? वही फीलिंग मेरे मॉम का तब था. इसीलिए उसने सारा ट्राई कर दिया. शायद उस जमाने में MTP एक्ट होता तो आज मैं नहीं होती. मेरे बर्थ के 3 साल बाद MTP एक्ट आ गया और मुझे ये मालूम नहीं है ऐसे कितने अनगिनत बच्चे अभी भी जिंदगी में आने से पहले गुजर चुके हैं. तो आज ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे आज ये इंटरनेशनल, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ. आज ये इंटरनेशनल मदर्स डे पे मैं कहना चाहती हूँ, ये दुनिया तेज धूप है. ये दुनिया तेज धूप है, लेकिन वो सच्ची छाँव है. लेकिन वो सच्ची छाँव है, स्नेह से सजी, ममता से भरी. वो सिर्फ माँ है. धन्यवाद. She's really emotional right now, real emotional, because I think everybody around here is actually feeling her story now. Is it? Yes. Okay. But moving on with the show right now. Now I'd like to call the Group CEO of Sahyadri Hospital, Mr. Abrali Dalal. Sir, I request you to please come up on the dais and address. Ladies and gentlemen, can we have a round of applause for our Group CEO, Mr. Abrali Dalal. Thank you so much. So I think I should start with the video. Dr. Puranik, hats off, huge respect. And before I say anything else, I think Dr. Puranik
deserves a standing ovation. So I think let's have a standing ovation for Dr. Puranik. Before we do anything else, I think that's the first thing. So we are lucky to have you, Dr. Puranik. That's all I can say. I mean, in this point of time. Thank you so much. Thank you for being there. So good afternoon, and thank you all for being here. First of all, I'd like to start by wishing a very happy Mother's Day to all the lovely mothers in this room. So happy Mother's Day, and also welcome all the men who are hopelessly outnumbered. But welcome to the launch of Momstory, a very special day today. You know, a hospital is a very sad place, not a very happy place. People come there for, they come to see their relatives who are they're anxious, they're getting treated. It's not a very happy place. But the moment you come to the mother and child department, the entire environment changes. You know, it becomes happy. You see smiles, you see babies being born. There's a lot of joyous moments that happen in the mother and child department. And I think that is why I think, and I'm sure most of you will agree that it's the most vibrant department in the hospital and very important to have. It kind of releases the tension, and you just want to see happy place amongst all the tension in a multi-specialty hospital. When I look at Sahyadri, I think we have a very experienced mother and child department. We do a lot of high-risk deliveries, so even during COVID, I think we had so many high-risk deliveries happening in Sahyadri, so many babies getting transported from all across the city, because we have the expert here, Dr. Supriya Puranik. We have a fantastic neonatal department, a lot of babies again getting transferred under Dr. Suryavanshi. And I was talking to him sometime before this, and we actually done a 23-weeker as though as 500 gram, which is a huge achievement. So that is the kind of strength that the mother and child department, the neonatal department in Sahyadri has. And I think Momstory is simply bringing all this under one roof. So it's the journey of the mother, which is made more comfortable and which is technically made more sound in terms of the most advanced equipment infrastructure that Sahyadri has. Before I move on, I want to again individually thank all the people who have made this possible. Why did we think of Momstory? Because we had the doctors who had the capability and the ability to help us, corporate people think of a brand called Momstory. So Dr. Supriya Puranik, head of obstetrics gynecology, needs no introduction. Well supported by Dr. Vaishali Chauhan, Dr. Aarti Rapal, and of course Dr. Pradeep Suryavanshi, who heads our pediatric and neonatal department. Sahyadri is known in the last 1 or 2 years to launch various initiatives. We have actually grown by scale. We've actually grown our hospitals, multiplied our infrastructure. And this is the whole idea we have with Momstory. What we're going to do is we're going to make this really big. It's going to be a really big brand. We will grow this further. To start with, Momstory is going to be there in 2 hospitals in Hadapsar and Nagar Road. We will start Momstory in Deccan Gymkhana, our flagship hospital, around 2 years down the line. And we also envisage a standalone hospital for Momstory. So we're going to have a different building which is going to have Momstory, and that's the future and what we envisage for this. Where the services are concerned, I'm sure the talkers, the speakers after this will talk about all the services that Momstory has to offer. But this brochure is there in your bags. So please carry this brochure, and if you kind of open it, the services are galore. So it's a bouquet of all services, really interesting ones. So we'll be looking at something called cosmetic gynecology. That is a service which is not really there everywhere. We're looking at water birthing. We're looking at so we have a standalone milk bank and various other things. So with that, I'll not take too much time. I think there are a lot of people, lot of things to say. But from our end and from Sahyadri's point of view, I think this is a big thing for us. Momstory is a big brand, and I promise you that this is going to be the biggest brand that you'll see in a long time to come in Pune. Thank you so much.
Thank you so much. Well, now I'll quickly move ahead with another AV, and I request everybody to please pay attention on the screen because this AV is about womanhood. Can we have the AV on the screen, please? Check. Well, a story on womanhood. What Sahyadri Hospital is looking forward, how are they looking forward to take care of every woman who's so कहा जाता है कि pregnancy is the second birth of every mother, and this is what care, respect and love Sahyadri Hospital wants to give to every mother every woman who's wanting to live her dreams. Well, quickly moving on now, और अब आज इस बहुत ही important day पे यानी मदर्स डे पे यहाँ पे हमारे साथ कुछ की ओपिनियन लीडर्स हैं जिन्होंने अपने बहुत ही कम टाइम स्पैन में बहुत कुछ अचीव किया है, यानी ब्यूटी विथ ब्रेन्स टू टेल यू। तो हम शुरुआत करेंगे कुछ फेलिसिटेशंस से। आज हमको हमारे बीच है और हम उन्हें बहुत सारा रिस्पेक्ट और टोकन ऑफ लव देना चाहते हैं, लेकिन फेलिसिटेट करने के लिए स्टेज पे मैं सबसे पहले बुलाना चाहती हूँ द ग्रुप CEO मिस्टर अबराली दलाल सर को। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। Also to accompany him and to felicitate our key opinion leaders, I request Dr. Ketan Apte, the Vice President of Sahyadri Hospital, to please come up on the dais. Let's have a round of applause for both of them. Starting with the women HR leaders in corporate sectors, so I request you to please felicitate one-on-one. Alternatively, yes. So, from the women HR leaders in corporate sector, firstly calling up on dais, Mrs. Ananya Patil from Head Admin ZS Association. Let's have a round of applause for Ananya Patil. She's the head admin of ZS Association. Extreme sorry to interrupt. I request you to take one more picture in the center of the stage, please. Moments are important. Yeah. Thank you so much. Calling up next on the dais, Mrs. Pooja, the Senior Manager HR from Company 3 Method. Let's have a round of applause for Mrs. Pooja. Mrs. Pooja Amravanchi. Look at this stunning lady walking up on the dais. Senior Manager HR from Company 3 Head. Congratulations, ma'am. Moving on to the next one, calling HR representative from Company 3 Method. From Company 3 Method, Miss Rucha Ghate. A round of applause for Miss Rucha Ghate, HR representative, Company 3 Method. Calling up next from the corporates, QA Manager, Company 3 Method, Miss Anita Pokhar.
round of applause for Miss Nutan Khandekar. From Loop Health, AVP Sales Head Mrs. Brushali Kumar. Congratulations, ma'am. So in the audience, everybody sitting, let's appreciate, let's have a louder round of applause and very big smiles on all our faces because these are one of us. Moving on, calling next, Mrs. Darshana Ahekar, GM of DCCIA. Let's have a round of applause for her, Mrs. Darshana Ahekar. Congratulations, ma'am. Thank you so much. Moving on to the next. From Assertion SV Lead, Mrs. Gauri Rawat. From Assertion SV Lead, Mrs. Gauri Rawat. A round of applause for her. So much. And now it's time to call two very, very special people present right here. You can call them celebrities as well. I hope you all have guessed from Red FM, RJ Shruti. Let's have a round of applause for her. I hope you're having a good time around the Sahyadri Hospital. From RJ, Big FM. She's already coming up on the dais. I've not even announced their name. Wow. RJ Junita, ladies and gentlemen, let's have a round of applause. RJ from Big FM. Can I have an extra mic? Arjun Junita, I would request you to please share. Yeah, there's something that you wanted to share and I request you to please share your moments and how do you feel here with us. Hello everybody. वैसे तो बाजे से so we love talking but today I'm really speechless. I just can't think of so many things that are actually going on in my head जो मैं आपके साथ share करना चाहूँगी. First of all, I'm thrilled to be here, to be amongst these wonderful ladies, and I'm also happy about the name Momstory. क्योंकि जब भी हम लोग सोचते हैं ना कि बच्चों को कहानियाँ सुनानी है, we go back in the history and think of all the great people, all the great women जिन्होंने देश के लिए किया है, किसी के लिए कुछ किया है. We always go back in the history, but I think now we don't have to go back all the way there. We just have to look around. There's so many stories around us. Every woman is a superwoman in herself. जैसे कि अभी हमने मैम के बारे में जाना. It's such a wonderful story of yours, and we don't think your mom is a villain at all because ये जो जर्नी थी उनकी वो आसानी से she could have hidden the truth. You know, बहुत सारी बातें शेयर नहीं करते अपने बच्चों के साथ mothers. They could have lied about it, but she made sure that she should tell you all these things because that has made you the person that you are today, and that's the story that is really going to be dominating all the stories in your life. So thank you for sharing that wonderful story with us, and I'm also happy that this Momstory also has this logo above it of mother and child, which looks like an infinity symbol. So I don't think so that Sahyadri Hospital is going to be limited in the way of creating such happy stories and happy innovations out there in the medical field. Thank you so much once again. Okay. Thank you so much, Arjun Junita. And well, here once again I'd like to call RJ Shruti on the dais because she also has something to share with us. Ladies and gentlemen, once again, let's put your hands together for the RJ from Red FM.
have a mic for her as well. Yeah. ये बहुत बड़ा रिस्क है कि आपने हमारे हाथ में माइक दे दिया है. Well, first of all, congratulations to Sahyadri Hospitals for their new venture, Momstory. It's a wonderful thing. और मी मराठीत बोलणार कारण मला स्वप्न मराठीत पडतात. सो खरं सांगायला गेलं तर मॅम मी देखील एक डिलिव्हरी केली आहे. म्हणजे मी तर मदर आहेच, पण ॲट द सेम टाइम मला तुम्हाला एक स्टोरी सांगायला आवडेल. I used to do a show called Red FM Call Center in the night, you know, आणि that was the only live show then. आणि त्यावेळेस असं झालं की I had this segment called प्रॉब्लेम तेरा सोल्युशन पुणे का. सो मी अनेकदा आपण असं असतं की आपण ट्रॅफिक सिग्नलवर असतो पण आपल्या डोक्यात काहीतरी वेगळं सुरू असतं. आणि मी लोकांना म्हणाले की जर का तुमच्या डोक्यात देखील आज काहीतरी वेगळं सुरू आहे, वेगळं ट्रॅफिक आहे, सो डाउनलोड दॅट, माझ्याकडे तुम्ही देऊन टाकू शकता. सो समबडी कॉल्ड मी अँड सेड की आमचं लव्ह मॅरेज आहे, माझ्या बायकोला लेबर पेन्स सुरू झालेत आणि त्यावेळेस प्रतिभाताई पाटील आल्या होत्या, त्यामुळे ट्रॅफिक जॅममध्ये तो अडकला होता आणि ही वॉज पॅनिक. ही वॉज लाईक आता मी काय करू. आणि दॅट टाईम आय सेड बिकॉज आय वॉज ऑन एअर. सो मी एक तर त्याला ट्रॅफिकमधनं काढलं बाहेर. त्यानंतर मी एका गायनॉलॉजिस्टला रँडमली कॉल केला आणि त्यांना रिक्वेस्ट केली की आता जर का घरी डिलिव्हरी करायची असेल तर काय करावं लागणार. आणि तिची जी शेजारणी होती तिला मी त्यांच्या घरी पाठवलं आणि रेड FM ऑन करायला लावलं. आणि हे सगळं होत असताना सगळे पुणेकर माझ्यासोबत होते. ते मला कॉल करत होते की इफ यू नीड एनी हेल्प. तोपर्यंत मी त्यांना ॲम्ब्युलन्स पाठवली होती आणि कहाणी में ट्विस्ट तो आताही है. सो हे सगळं होऊन जेव्हा ते हॉस्पिटलला पोहोचले तेव्हा कळालं की बाळाची कॉर्ड जी आहे ती अडकली, त्यामुळे लिटिल डिफिकल्ट आहे. आणि 12:30 होऊन गेले होते. तोपर्यंत लोकांचे कॉल्स की आम्ही बर्फी आणू, पेढा आणू, जलेबी आणू, ते सांगा. सो इट वॉज व्हेरी हार्ट वॉर्मिंग की असा रिस्पॉन्स येत होता. आणि फायनली त्यांना मुलगा झाला आणि वी नेम्ड हिम रेड FM का लाल. सो मला असं वाटतं आई एक असा विषय आहे की सगळेजण त्याच्या प्रेमात असतात आणि त्यामुळे कोणीही मदत करायला पुढे येतच. सो दिस हॅज हॅपन विथ मी. पण मला असं वाटतं की मी स्वतः सांगते की मी पूर्णपणे माझ्या गायनेकवरच विश्वास ठेवला होता की माझी डिलिव्हरी नीट होणार. आणि आय थिंक वी ऑल प्ले गिल्टी मदर्स. डू यू अग्री विथ मी? वी ऑलवेज फील की अरे आपण आपल्या मुलाला जास्त वेळ देत नाही आहोत, आपण बिझी आहोत. आय विश की यार मी त्याची PTM ला जाऊ शकले असते. छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी वी प्ले गिल्टी मदर्स आणि असंच मला एका फेजमध्ये वाटलं होतं की आय थिंक मी चूक करते माझ्या बिझी स्केड्यूलमध्ये. आय एम नॉट एबल टू गिव्ह टाईम टू माय चाइल्ड. आणि आय सेड दॅट टू माय किड. मला 9 वर्षांचा मुलगा आहे आणि मी जेव्हा त्याला हे म्हणाले तेव्हा तुम्हाला म्हणाला मम्मा प्लीज डोंट डू दॅट. आय एम सो प्राऊड ऑफ यू. माझ्या स्कूलमध्ये मी फेमस आहे आर्जश्रुतीचा मुलगा म्हणून. सो दॅन मला कुठेतरी क्लिक झालं की यार आपण कुठेतरी स्वतःला दोष देत असतो पण ॲक्च्युली आपली मुलं आपल्याबद्दल खूप प्राऊड फील करत असतात. सो आय थिंक मला जेव्हा केव्हा लो फील होतं आय ऑलवेज थिंक अबाउट हिम आणि मला त्याने एक ऊर्जा मिळते. आणि तुम्ही आत्ता हे जे IVF मटर्निटी, गायनेकॉलॉजी, चाइल्ड केअर ह्या सगळ्या गोष्टी सुरू केल्यात आणि मला वाटतं आजकालच्या स्ट्रेसफुल लाईफमध्ये, आजकालच्या हेक्टिक लाईफमध्ये IVFची खूप मोठी गरज आहे आणि एका आईला मातृत्व देण्याचं काम तुम्ही करताय. त्यामुळे तुमच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या. आणि युअर स्टोरी वॉज सो इन्स्पायरिंग. ॲज जॉनिथा राईटली सेड की आपल्या आजूबाजूला इतक्या मॉम स्टोरीज आहेत की आपल्याला आता बाकी इतिहासकालीन स्टोरीज सांगायची गरज नाही आहे. आणि मला एक छोटीशी रिक्वेस्ट आहे कारण इवन आय डू सोशल वर्क थ्रू माय रेडिओ शो आणि त्यात मला एक लक्षात आलं की एव्हरी हॉस्पिटल टॉक अबाउट IVF, मटर्निटी ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत पण पोस्ट पार्टम डिप्रेशनबद्दल कोणीच सांगत नाही. मला फक्त हा मुद्दा तुम्हाला इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी. माहिती आहे छोट्या तोंडी मोठा घास घेतलाय पण आय थिंक मला पण कुठेतरी ह्या गोष्टीतनं जावं लागलं होतं. सो जर का त्याबद्दल देखील तुम्ही एक पाऊल उचललं आणि तुम्ही जर पोस्ट पार्टम डिप्रेशनबद्दल ग्रेट मॅम. सो त्याबद्दल जर का प्रत्येक प्रेग्नेंट आईला कळलं तर शील बी आय थिंक ती रेडी असेल टू गो थ्रू इट आणि तिला तिच्या आईला पण कळेल की तिची काळजी कशी घ्यावी.
So thank you so much for calling me here and inviting me here. And congratulations for Momstory. Thank you so much. Thank you so much to you. Thank म्हटलं you. ना रिस्क आहे की मी खूप बोलते त्यामुळे माईक माझ्या हातात दिला. No, it's not about the mic, but the story that you mentioned. It's like you said, her story was inspiring, but here your story is also inspiring. मतलब कभी भी कहीं पर भी अगर आपको हेल्प करनी है, आप कैसे भी कर सकते हो. You don't need and you have a platform, but I think कोई कहीं भी कैसे भी कर सकता है अगर करने की इच्छा हो तो. Yes. Thank you so much. Thank you. Let's have a round of applause for her. Yes. Moving on. Lastly, now I'd like to welcome on dais our social media influencer, Ms. Priyanka Singh. Can we have a little music, please? She's coming up on the dais to take her award. Ladies and gentlemen, once again, let's put your hands together for social media influencer Priyanka Singh. Thank you so much. Ketan sir and Abrar, I request you to please take your seats. Let's have a round of applause for both of them, CEO and the Vice President. Okay, so अभी स्टेज पे जितने भी beautiful women, जितने भी hard-working women who've earned their name in a very small time through their efforts, उनके कुछ testimonials हैं, उनके कुछ videos हैं जो उन्होंने हमारे साथ share किए थे. We'd like to share with all of you here right now. Can we have the videos on the screen, please? The KOL videos. My name is Priyanka Singh. I am a mom blogger. My page is Momstory Fashionista, where I share my motherhood journey. If you talk about the motherhood journey, it's amazing, it's amazing, it's simply amazing. It's like a whirlwind goes around, and there is always a new learning curve every time. You're gonna learn something new. With kids, only not the kids are learning, we are learning. We are learning how to deal with them, how to empathize with them. So that way I am still learning, and it's a long process, I guess. If you ask me what change I see after being a mother, so I would say I have become much calmer, much patient. And I want to learn things, so that thing is there, so but I am much better. My patience level has been grown immensely, you can see, with the little one. And what should I want to advise to the new moms? Just enjoy the phase, just enjoy this motherhood. You're gonna love it, and the time which will go is not gonna come back, so you taste it. Record it so you could revisit the memories of those stuff. So, and they say it needs a village to raise a kid. It do need a village, but I would say a mom can do it. All moms can do it very well. So, and all moms are the best mom. Just don't compare the mom that the other person is doing good and not doing. No, it's nothing like that. We all are doing good. We all are doing which is best for our kids. So never compare your journey with others. Everybody has their own ups and downs. So just learn and learn. Just don't compare yourself. You will not get anywhere after comparisons. So it's better you just embrace it. How is it? And just enjoy it to the fullest. And my best wishes to all the would-be moms and the new moms. Just enjoy it. I would say this is the best job. I am doing it. I'm so proud of myself for most of the things, but nothing can beat this feeling of motherhood. So this is the best thing. Okay, thank you. Regarding motherhood, I have been on both sides of the story at this point of my life. I have played my fair share as a daughter to a remarkable woman. Motherhood is a bliss that every woman is gifted with, and it's important that we nourish this motherhood in all of us. It is different for every mother. Being a working woman and taking care of your child is a major challenge. How we handle it is totally up to us. By God's grace, at least inside me,
silage, at least in my case, silage helped me find the sweet spot of life, spot in my life of handling work and life. The biggest secret to finding this balance is not mixing up your personal and professional life. As and when you enter your office, be focused, give your 100% to the company that you work from. And at the same time, when you reach home, leave everything aside regarding office at your doorstep and then enter with a clear mind. The biggest advantage of practicing this work-life balance is that we lead by example for our kids. As a working mom, I can confidently say that my daughter is capable of making her own decisions today and has been doing that since a very young age. Hey, I'm Nutan Khandekar, part of the HR team at Agrostar. So I would like to present my few thoughts and feelings about my motherhood journey. Talking about motherhood, it's a privilege and a joy, which no materialistic thing in this world can. Actually, like to thank Sahyadri Hospital for giving us this opportunity to relive those moments once again through this forum. So again, every mom story is unique and yet the emotions are always the same. Mine is not a different one, but again unique and exhilarating for me and my family in a very my story is unique in a way that I had a cutting of a doll from a magazine which exactly resembles my daughter, and I really feel that this is a God gift sent to me as a real doll in my real life. So I am really proud of that. All new moms is to be celebrate her own motherhood journey, the way we celebrate the birth of our children. I think in the phase we really forget to have a lot of fun. We feel pressurized of being a mom and we feel that we need to have everything perfect. But I think in that process we really miss to have those fun moments in our life. And every child really needs a fun-loving, a cheerleader for them in the form of their parents throughout their life, to be their best friends. So I think that's the most important message I'd like to give to all would-be moms and the young moms that I see now. Hey everyone, my name is Anita Popena and I'm working for Cumulative. Becoming a mother was a wonderful experience with lots of ups and downs, like morning sickness, cravings, baby's first food, and finally having her in my arms. The highlight of my journey is that being a working woman, I was active throughout my pregnancy and I worked the last day of my pregnancy, and this helped me to have a mother delivery. Just listen to your body, take one step at a time and enjoy your journey the way I am doing it right now. Yes, I am expecting and I'm going to be a mother for the second time. Soon I will be entering into my third trimester and I'm enjoying my journey. Thank you. Hello, my name is Sonia Agarwal Konchetti and I'm the founder of Pula Pune Ladies. Talking about motherhood, I have a 13-year-old daughter. Her name is Sharanya, and till now my motherhood journey has been extremely nice. I will not call it smooth, but adventurous, and I've totally enjoyed it. My message to all the new mommies who just delivered a kid is that while you love your kid and your family, never forget to love yourself and give time to yourself. Hello everyone. First of all, thank you Sahyadri Hospitals for considering me, and all the very best for your new initiative. Every mom story is unique and special. My story highlights starting with morning sickness for entire 9 months, traveling from Pasha to Karadi for till 10th month. I think I stopped working 2 days before I delivered Ira. Falling in bathroom when I was 6 months pregnant, eating junk, exercise, false labor pains, and etc. etc. But the very special moment for me was holding Ira for the first time. It literally made me forget about all the ups and downs, pains, and challenging situations I went throughout the 9 months. So the best part I realized
what my mom went through when I was 2. And I really, really respect and love her for all the sacrifices she has done for me throughout her age. Thank you a lot, and all the best for all the new moms and to-be moms. Thank you. Let's have a round of applause. Well, these AVs are giving goosebumps now after listening to their story. Well, there's one more felicitation that has to be done. Like you've seen, there was one AV that was presented here, but we couldn't call her on stage because we wanted her to settle down. But in the meanwhile, to felicitate our special guest who was present here, I request and welcome on the dais Dr. Supriya Puranik ma'am to please come up on the dais. Let's have a round of applause for Dr. Supriya. And now, calling up on stage, a living example who's empowering a lot of ladies, who's managing a huge group, not only virtually but also on ground. Ladies and gentlemen, with a round of applause, please welcome Ms. Sonia Kunjeti, the founder of Pune Ladies Facebook group. Louder, louder, louder. Come on, everyone. Dr. Supriya ma'am to please felicitate her and thank her for her presence here today. Thank you so much. Ma'am, I request you to please be present here today because right now because the next session is we are continuing with your session. Please. So we are going to start with an interactive session on Momstory where there will be a lot of experts giving their views and Ms. Sonia Kunjeti will be asking a lot of questions and sharing a lot of details, a lot of her experience that she has. So for that, I'll call the medical team on the dais. Dr. Supriya Puranik ma'am, gynecologist and infertility expert, Dr. Pradeep Suryavanshi. Let's have a round of applause for all the experts coming up on the dais. Dr. Vaishali Chauhan, gynecologist, Dr. Aarti Rapol, IV specialist. And like we all know, our moderator, that is Mrs. Sonia Agarwal Kunjeti. Can we have 2 mics on the stage, please? So on stage we have Dr. Supriya Puranik, Dr. Pradeep Suryavanshi, Dr. Vaishali Chauhan, Dr. Aarti Rapol, and our moderator, Ms. Sonia Agarwal Kunjeti. The stage is all over to you. Thank you so much. Thank you so much, and congratulations, Sahyadri. Congratulations for this superb event and launch of Momstory. The entire panel discussion is about Momstory. You know, it takes months and dreams and efforts to launch something huge like this. And it's an honor today to have such panels like such humongous doctors in Pune who are so well known. And without wasting much time, you know, we're going to start this because, you know, I love panel discussions. Panel discussions, you know, especially not you just talking on the stage non-stop. You get to understand different thought processes and ideas and the reasons behind everything. So let's begin this. We have 4 doctors from Sahyadri, and I think before we start, we should quickly have their names, though you know everybody knows, but of course a formal way of starting. Ma'am, if you could just start with your name, please. I am Dr. Aarti Rapol. I am an infertility and IVF consultant. I work at Sahyadri Hadapsar unit. Applause for these doctors, please. Sir. I'm Dr. Pradeep Suryavanshi. I'm a HOD of Neonatology and Pediatric Departments at Nagar Road Sahyadri Hospital. I am Dr. Vaishali Chauhan. I am a gynecologist and laparoscopic surgeon at Hadapsar branch of Sahyadri Hospital. Thank you so much, ma'am. Thank you. Great. So I have my first question. What is the concept and why is there a need of Momstory? Concept. वैसे हमने AV में देखा का आरोग्य
बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। जब वो हेल्दी है तो फैमिली हेल्दी रहने वाली है। तो जो कॉन्सेप्ट अपने मॉम स्टोरी का जो है उसमें स्त्री का मानसिक और शारीरिक, पहले मैंने मानसिक कहा है, मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम से जुड़ी सारी सॉल्यूशंस मॉम स्टोरी में मिलने वाली है। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ एंड कुछ भी रिलेटेड टू वुमेन्स हेल्थ एंड बेबी केयर। तो ये कॉन्सेप्ट है अपने मॉम स्टोरी का। दूसरी बात है, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा लच के बताना चाहती हूँ कि मेनार्की से लेके पीरियड के शुरू जब होते हैं उससे लेके मेनोपॉज तक और उसके बाद भी, तो उसमें डिलीवरी वो सब आ ही जाती है, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, पोस्टमार्टम, ये फिजिकल पार्ट हो गया। और जो मेंटल पार्ट है, ये मेंटल पार्ट में कपल बॉन्डिंग से लेके हमारे इन-लॉज के साथ कैसे बिहेव करना है, ये भी सारा कवर होने वाला है अपने प्री मॉम्स प्रोग्राम के थ्रू। So ma'am, what we understand is the thought of conceiving, तब से लेके डिलीवरी होने के बाद तक का पूरा प्रोसेस will be covered in mom story. Everything from menarche to menopause, जब टीन्स होते हैं, पहले पीरियड्स आ जाते हैं, उससे लेके पूरी एंटायर वुमेन्स जर्नी तक हम मदद करने वाले हैं। That's great. I think a lot of people are going to get super support now because I think what I really liked is also the focus on mental health. What I said कि मानसिक health भी बहुत important है, and a lot of women especially will understand this thing because as even RJ Shruti said that it's so important to focus on that stage of life. मैम एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसा क्या गैप था जो आपको लगा कि ये फुलफिल करना चाहिए स्टोरी? ऐसा गैप, जैसे अभी हमें मालूम है हम पहला चाइल्ड कंसीव करने के लिए लेट करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा वर्क प्रेशर है, हमारी बेसिकली ओबेसिटी, मोटापा बढ़ रहा है, और इतने सारे प्रेशर्स एंड टास्क रहते हैं, हमें कुछ गोल अचीव करने होते हैं, और इन सब की वजह से हम हमारा जो कंसीविंग का एज, हमारा कंसेप्ट हो जाता है कि हमें कंसीव करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, बड़े एज में हमारा बेबी होने वाला है, इसीलिए हमारी प्रेगनेंसी जटिल समस्याएं निर्माण होती है प्रेगनेंसी में। और उसके साथ ही हमारी फैमिली अभी न्यूक्लियर फैमिली बन गई है। अभी साइंस में इतना सारा बदलाव, नए शोध आए हैं, टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ है, और इसीलिए जब हम कंसीव करते हैं तो हम पहले किससे पूछते हैं? परिवार वालों को, घर के बड़े लोगों को, और उनके लिए ये आज के पेस तक नॉलेज रहना, उनके लिए थोड़ा उनसे हेल्प मिला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसीलिए फिर हम निर्भर होते हैं सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे इतने सारे ब्लॉग्स रहते हैं, वीडियोस रहते हैं, जो खुद डॉक्टर भी नहीं है वो चाइल्ड केयर के बारे में और मदर केयर के बारे में बताते हैं। इसके साथ ही दवाइयों की भीड़ में उन्हें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में खड़ा करने जगह किया है। तो उन लोगों के लिए, और वैसे देखा जाए तो डेडिकेटेड स्टाफ उनके लिए है, वो स्टाफ को पूरा मालूम रहता है कि ये कौन है, इसके चैलेंजेस क्या है, उसने क्या करना चाहिए। तो एक मदरली फीलिंग, घर जैसा फीलिंग, तो ये मॉम स्टोरी मदर एज भरने वाले हैं। That's such a wonderful thing कि पूरा Florida ward ही directly is child care at Momstory. Now, ma'am has mentioned about the mother, but the happiness of the Mother's Day is ultimate product is child, and this is the one aspect that babies deliver. So, what is important for the child care is the ultimate product. So, what is important for the child care is the ultimate product. So, what is important for the child care is the ultimate product. So, what is important for the child care is the ultimate product. Satisfaction today. और इसके लिए जो most important चीजें हैं वो है न्यूबॉर्न ICU, न्यूनेटल एलिमेंट। अभी आप देखते हैं कि जब IVF प्रेगनेंसी होती है या डिलीवरी होती है, 10% बच्चे को ICU की केयर यानी कि हेल्प लगती है, और जहाँ हॉस्पिटल में ICU है, हमारा अच्छी बात है अभी 12 वेंटिलेटर्स और हम लोग 22
प्रेगनेंसी के बारे में बात 6 month child, 1 year child, 2 year child, help of the pediatric intensive care. And जो पूना में जो 4 बड़े pediatric intensive care with all facilities available at Nagar Road. So हमारे पास PICU है कि जो PICU बच्चे का naturally all sorts of help करता है. अभी मैंने intensive care के बारे में बात किया, but अभी along with intensive care हमें ancillary branches की बहुत help लगती है. और उसमें सबसे important जो branches है वो एक है developmental care. आप अभी lot of time बोलते हैं कि oh my daughter is now 11 years, we need help. My child is 14 years age who is adolescent, we need help. वो adolescent physiology और developmental physiology उसके लिए हमारे पास developmental pediatrician है, हमारे पास pediatric cardiologist है, pediatric nephrologist है, genetic consultant है. So what we are trying to say that जब बच्चा 500 ग्राम के ऊपर until 18 years और ये services is the future for that child, not only for the Pune but for the India. One of the child in future is going to become the Prime Minister of this country. That is what we are expecting from this Momstory. Thank you. Thank you so much, sir. Very well said and in detail. Dr. Vaishali Chavan, I have a question for you. जनरली जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके दिमाग में ना बहुत सवाल चालू हो जाते हैं एंड स्पेशली वर्किंग वुमेन, यू नो, दे इवन हैव द स्मॉलेस्ट क्वेश्चंस लाइक मैंने मटर्निटी लीव कब लेनी चाहिए, या मैं किस मोड ऑफ ट्रैवल, मैं बस से ट्रैवल कर सकती हूँ क्या, मैं 2 व्हीलर पे जा सकती हूँ क्या, या जब मैं जॉब पे हूँ तो मैं क्या खाऊँ, कितने वक्त में खाऊँ. तो ऐसी छोटी छोटी सवालें भी मॉम स्टोरी के अंदर लोगों को मदद की जाएगी. बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट सोनिया जी. बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू से इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज to be here, to be interacting with you, because you are the greatest visionary and आपने सबको install किया हुआ है for all the ladies, and you know all the issues of the women of every aspect, you address them all and solve them all. So it's indeed a pleasure to be here with you, and it's an honor to be here with my co-panelists Supriya Madam, Dr. Suryavanshi, Dr. Aarti. Now, regarding your question, today is a very glorious day, Mother's Day, and on this glorious day, Sahyadri Hospital has launched Momstory. So, I would like to say that we at Sahyadri Hospital, we would like motherhood is a journey of joy, and we would like to be part of this journey. Just as Supriya Madam ne kaha, that at every point, we would like to be there to care for you, to advise, and to be there at every point whenever you reach out for us to help. Now coming to your question, many times nowadays most of the girls are working girls and they balance and they are multitasking, work and home and all these things. So when is the right time to take the leave? Any of these questions, the first thing is to involve your gynecologist. If you have a normal pregnancy, then yes, you can continue working right up till the date of delivery. But if there's any kind of complication like placenta previa or risk of premature birth or intrauterine retardation or any high-risk factors, then please take the advice from your gynecologist. If she's advised you rest, you need to take a rest. Now, there's another thing I would like to tell you about maternal. There's an act which protects and which gives us, this came about in 2017, Maternal Amendment Act for leave, and in any organization as per the government, they are entitled, mothers are entitled for leave right from 12 weeks to 26 weeks post-delivery and antenatally 6 to 8 weeks. But of course, I would suggest that each one of you please consider your organization rules and then go ahead with taking your leave. And also, pregnancy is your priority. At any point of time you feel that this is too stressful, just relax, take your leave. Second question was about traveling. So, long distance travel, you know, long distance travel is absolute no at any point, any time, it is always going to be risky. But there are some essential reasons that pregnant women do have to travel. During the first trimester, usually there's a lot of nausea, and if you travel, there's risk of bleeding, risk of abortion. So preferably prevent first trimester traveling. Second trimester is a little bit better, all the symptoms have gone. And after 36 weeks of pregnancy, traveling again is a little risky. Even airlines don't allow, you know, after 36 weeks. So before you travel, and especially if you're going by
flight, check the airline rules, take a certificate from your gynecologist that it's safe for you to travel. And when you travel, see that you avoid outside food and water. If you're traveling by train, you know there should be enough spacious place, walk about, hydrate yourself, drink a lot of water, and so on. I think I've answered your question. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In fact, this also helps us to understand that Momstory is going to cover everything, right from the smallest doubt and question that a woman has to the biggest thing. Absolutely. Great, great. Ma'am, coming to you, Dr. Aarti Rabul. You know, suddenly in the last 1 week, जो हमारा platform है पूरा, I've seen a lot of ladies put up post where they are asking for prayers, and I'll just share this. उसमें लिखा होता है कि I'm going through my 6th IUI, I'm going through my 2nd IVF. Please pray for me कि ये positive I result. तो मुझे आपसे ये पूछना है कि at what point a couple should, you know, visit the doctor if they are unable to conceive. And is IVF the only choice? Surely IVF is not the only choice. So as a doctor, what we say is a couple is suffering from infertility if they are trying for 1 year they are trying for 1 year with regular unprotected intercourse. But nowadays we see a lot of women who are more than 35 years of age. Then this definition changes. We don't ask them to stay at home for 1 year. It's like for 6 months if they are trying and then they don't conceive, they have to come. But adding further to this, I would advise that if you are older and you are post 35, you should right away go to a doctor, get yourself checked, because at times we do get surprises where their egg reserve is very low. And it's always a good idea for a couple to get themselves checked right away if you are seriously thinking for pregnancy. Also, even if you are less than 35 years of age and you do have certain symptoms which suggest can cause problems further, like if they are not having regular cycles, if they have severe pain during periods, which can be a sign of endometriosis. You have a history of your mother having early menopause, because the girls also have earlier menopause if there is a family history. Men having sexual dysfunction, women having sexual dysfunction. So all these reasons they have to consult a doctor right away. And initially when they come to us, we do not, surely not advise them IVF, of course. So most of the women do conceive without much of treatment, where they can just monitor their ovulation, and most of the working women nowadays we see are missing their fertile period, because their ovulation, they at times rely on certain kits, and you know, as madam said, on blogs, on people who are not even doctors, and then they miss the fertile period. Here we initially check where the fertile period is through follicular monitorings, and then if at all there is a problem which we detect, we might go to the next step, that is IUI, as you said. And 6 cycles is a little more. We generally advise about 3 to 4, and if there is surely a problem, we have to go for the next step, that is IVF. Thank you so much, ma'am. Coming back to Momstory, Dr. Puranik, what value addition will Momstory offer to the new moms? Yeah. So with the launch of Momstory, हम लोगों ने बहुत सारी स्पेशलिटीज इसमें ऐड कर दी है. एक तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है. इट्स अ प्रोग्राम, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम रहेगा. और दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है, तो उसमें जो नए डिपार्टमेंट्स हम जो ऐड कर रहे हैं, आजकल हम देखते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग नेचुरल डिलीवरी प्रेफर करते हैं. नेचुरल एंड नॉर्मल में डिफरेंस रहता है. नेचुरल डिलीवरी यानी कि सब कुछ नेचुरली होना चाहिए, अनटच्ड. सलाइन नहीं चाहिए, टैबलेट नहीं चाहिए, इंडक्शन नहीं चाहिए, अपने आप बेबी बाहर आना चाहिए, स्टिचेस नहीं चाहिए, लेबर एनर्जेसिया नहीं चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है लेबर पेन्स जो रहते हैं, मदर को लेबर पेन जो रहते हैं, वो सबसे गहरा पेन रहता है जिंदगी में. लेकिन वो पेन अभी इतना सारा पढ़ा रहता है, सुना रहता है, तो वो डर जाते हैं. लेकिन फिर भी हमें नेचुरल डिलीवरी चाहिए. तो वन ऑफ द वे ऑफ डिलीवरिंग नेचुरली, जिसमें 50% पेन फैक्टर कम हो जाता है, दैट इज वाटर बर्थ.
तो वाटर बर्थ की बड़ी सुविधा हम करने वाले हैं, बड़ा एक सूट बनाने वाले हैं, उसमें वाटर बर्थ होगा। उसके लिए अपने पास वाटर बर्थ एक्सपर्ट डॉक्टर वेदा है, डॉक्टर रितु है और सुमन है जो डूला का सर्टिफिकेट कोर्स उसने किया है। तो एक वाटर बर्थ फैसिलिटी है। दूसरा इंटरेस्टिंग एक डिपार्टमेंट हमारे इसमें ऐड होने वाला है, दैट इज कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी ये अनटच्ड एरिया है जो हम बात बताने नहीं चाहते, इवन हस्बैंड को नहीं बताने चाहते तो डॉक्टर से कैसे कहें। तो ये कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के अंडर लगभग 35 प्रोसीजर्स आ जाते हैं। जब हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम खांसते हैं, छींकते हैं तो यूरिन छूट जाती है, और वो यूरिन छूट जाती है, वो हमारे लिए एकदम एम्बैरेसिंग सिचुएशन रहती है। तो वो कैसे एड्रेस करें। कभी ऐसे भी हो जाता है नेचुरल बर्थ के बाद अपने जो वजाइनल स्टिचेस रहते हैं थोड़े से अनहील्ड रहते हैं, और इंटरकोर्स के दौरान प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। वो कभी मेल पार्टनर को समझ में आता है और ये बात कैसे बोले, कैसे कहे, ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है। कभी ऑर्गेज़म की प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे बहुत सारे सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी इसमें कवर होने वाले हैं। इसमें PRP लाइक ट्रीटमेंट होने वाली है, लेजर्स रहने वाले हैं। ऐसे 35 गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर अंडर द नेम ऑफ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी ये हम शुरू करने वाले हैं। तीसरा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट रहता है काउंसलिंग। फॉर काउंसलिंग वी आर गोइंग टू ऐड प्री मॉम्स प्रोग्राम, इस ऑलरेडी जो शुरू किया है उसको जो प्रोग्राम है वो कंडक्ट कर रही है, उसके लीडरशिप के अंडर है डॉक्टर महिमा बख्शी। डॉक्टर महिमा बख्शी ये प्रोग्राम लेके आगे जा रही है और इंटरेस्टिंगली वो सारे प्रोग्राम्स अच्छे से कवर कर रही है, जिसमें ये एक्चुअली फिटनेस एंड वेलनेस एक्सपर्ट है जो दिल्ली में स्थित है। वो भी अपने मॉमस्टोरी के थ्रू अपने से जुड़ी है। उसे कंसेप्शन से पहला, ड्यूरिंग और उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, उसमें न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, एक्सरसाइज क्या करना चाहिए, मेंटल हेल्थ क्या है, क्या अलार्मिंग सिग्नल्स है, नॉर्मल नेचुरल बर्थिंग के लिए क्या करना है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए कैसे हमने पहचाना है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होने वाली। स्तनपान कैसे करवाना है। तो ये प्री मॉम जो प्रोग्राम है ये प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, इसमें हमारी फिजिकल, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए हमें सपोर्ट करने वाला ये ऑनगोइंग प्रोग्राम अभी से चल रहा है। चौथा महत्वपूर्ण तो हमें बताया ही, हमारे पास मिल्क बैंक, ह्यूमन मिल्क बैंक है। ये पुणे शहर में हमारी दूसरी बैंक है। वो हमारी 2 साल से शुरू हुई है, लेकिन इसका किसी को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसीलिए दिस इज द प्लेटफॉर्म। उसमें हम बताने वाले हैं कि हमारे पास मिल्क बैंक भी है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हम ऐड करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव हमने शुरू किया था कोविड से पहले, दैट वाज अ रिलैक्स मॉमी प्रोग्राम। हमारी ट्रेन नर्स, डॉक्टर्स घर जाते थे। प्रेग्नेंट मॉमी जब 9th मंथ रहती है, उसमें घर हॉस्पिटल आने में दिक्कत होती है, तो घर जाके बेबी का स्वास्थ्य देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, ब्लड शुगर देखते हैं, एनीमिया रूल आउट करते हैं, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन अरेंज करते हैं, बेबी के स्वास्थ्य के लिए NST मशीन लिया जाता है, बेबी के हार्ट बीट्स भी देखते हैं और उससे पता चलता है कि बेबी का अंदर का स्वास्थ्य ऐसा कैसा है। तो ये भी हम अभी पोस्ट कोविड वापस से शुरू करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो दिल को छूने वाला प्रोग्राम मॉमस्टोरी का और एक हमारा पहलू है, वो है हम सबको अपील करने वाले हैं। हम सारी हमारी मॉमीज को, वुड बी मॉमीज को, जो ऑलरेडी हो चुकी मॉमीज, सबको ये मेरी तरफ से, हमारी मॉमस्टोरी की तरफ से और सह्याद्री की तरफ से अपील है कि हर एक मॉम की स्टोरी रहती है। मॉम स्टोरी वह मदर्स आर बॉर्न। हर एक मॉम की एक स्टोरी रहती है, हर एक मॉम की एक पहचान रहती है, हर एक मॉम के कंसेप्शन के टाइम कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसने बताना चाहिए। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म जो बताना है, जिसको अपनी खुद की स्टोरी लिखनी है विदाउट मॉम स्टोरीज प्रमोशन। ये प्रमोशन के लिए नहीं है,
ये मॉम स्टोरी के वेबसाइट में खुद की स्टोरी, जैसे आपने मेरी स्टोरी देखी, मेरे मदर की स्टोरी देखी, मुझे भी, मैं जब मदर बनी वो भी मेरी स्टोरी मुझे लिखनी है और वो मॉम स्टोरी के प्लेटफॉर्म में जरूर होने वाली है और जरूर रहने वाली है। कोई किसी मॉम को ऐसा रहता है कुछ भी स्टोरी नहीं है, चलो इस महीने में हमने प्लान कर दिया, उस महीने में कंसीव हो गया, सारा सब अच्छा चल रहा है, लेकिन उन्होंने भी लिखना है जब मेरा बेबी, बेटा हो या बेटी, मेरे अंदर थी, मेरे वूम में थी, बढ़ रही थी, तो मेरे मन में क्या विचार थे, मेरे मन में वो बेबी के प्रति, बेबी कैसा होना चाहिए, बेबी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, डैशिंग होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, जो कुछ विचार आपके मन में आपके प्रेगनेंसी के दौरान थे, बेबी को बर्थ, क्योंकि ये आप कब तक कर सकते हो, जब तक आप प्रेग्नेंट हो तब तक। एक बार डिलीवरी हो जाती है तो आपको इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे एक स्टोरी लिखनी है। तो ये प्रिपरेशन आपको बर्थ से करना है, बेबी को जो बताने चाहते हैं आप वूम में जब रहते हैं वो सारा आपको लिखना है। और जब बेबी वो 18 साल का हो जाएगा तब बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे, लेकिन तब वो बेबी अपने प्लेटफॉर्म पे देखेगा कि मेरी मॉम मेरे वक्त क्या विचार कर रही थी, उसने मुझे क्या दिया है। ठीक है, तो ये सारी मॉम्स, मैम दिस इज सो हार्ट वार्मिंग। आई एम जस्ट इमेजिनिंग, यू नो, जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी एंड शी विल बी रीडिंग द एंटायर स्टोरी। दिस इज फैब्युलस कॉन्सेप्ट सीरियसली। एंड ऑल्सो दी अदर पार्ट जो आपने ह्यूमन मिल्क बैंक की बात की है, यानी मैं लोगों को बताना चाहूँगी, सब ऑडियंस को यहाँ, कि कोविड के समय स्पेशली पूला पे भी देयर वर अ लॉट ऑफ पोस्ट जहाँ कुछ लोगों ने लिखा था कि हमारे घर में अभी एक बच्चा पैदा हुआ है और उसकी माँ, शी इज नो मोर, यू नो, बिकॉज ऑफ कोविड, एंड दैट किड नीडेड मिल्क. So that is when these human milk banks play a major role. Of course, in Pula also a lot of young mothers came forward who pumped extra milk and donated. So that's a fantastic concept. You know, world is going to another level with technology. Of course, सबके pros and cons होते हैं, but जो pros है, I think वो आगे लेके चलेंगे तो they are fantastic. Great. Dr. Pradeep Suryavanshi, I would like to ask you that the childcare services at Sahyadri Hospital, Momstory, how are they different than the other centers, or I could say other hospitals? Yeah. So, जो मैं बात करना चाहता हूँ कि अभी एक जो लास्ट पॉइंट है उससे मैं शुरू करता हूँ, इज द ह्यूमन मिल्क बैंकिंग। अभी हम सबको मालूम है ब्लड बैंक, बट ह्यूमन मिल्क डोनेशन ये कंसेप्ट अभी भी कम है। तो मैं आज आपको सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हम लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं वैसे ही प्लीज थिंक अबाउट ह्यूमन मिल्क डोनेशन। क्यों, ये भी मैं बोलना चाहता हूँ। जो स्पेशली प्रीटर्म बेबी होते हैं जिनका वेट 1.5 के नीचे है, जो लेस देन 34 वीक्स, नॉर्मली आपको मालूम है 9 मंथ्स, हम लोग 40 वीक्स में बात करते हैं, वीक्स में बात करते हैं। जो बच्चे लेस देन 34 वीक्स से यानी कि प्रीटर्म बॉर्न होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होता है? मदर्स मिल्क। इफ हमने उनको मदर्स मिल्क दिया तो सर्वाइवल चांसेस 90%। इफ हमने उनको मदर्स मिल्क नहीं दिया तो सर्वाइवल चांसेस 40%। अभी ये परसेंटेज देखो, आप मदर हो और आप मदर इज द गॉड। हम हमेशा बोलते हैं मदर इज द गॉड। हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं अपने मदर की वजह से बैठे हैं। तो ये जो मदर का मिल्क है, ये जो मिल्क हमें मिला, मीन्स मिल्क बैंक को मिला, तो हम लोग लॉट ऑफ प्रीटर्म बच्चे सेव कर सकते हैं। कंसेप्ट जो है ब्लड बैंक की अच्छी है, लेकिन मिल्क बैंक की कंसेप्ट अभी भी कम है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि काउ मदर कैन फीड 4 बेबीज, तो हमारी मदर भी 4 बेबीज को फीड कर सकती है। यानी कि यू कैन डोनेट द मिल्क, यानी कि आप एकदम स्टेबल होंगे तो बहुत सारा मिल्क हमारे बच्चों को मिल जाएगा और प्रीटर्म बच्चा सर्वाइवल ऑफ इंडिया और अच्छा हो जाएगा। जो प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं उनमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज्यादा होता है, उनके ब्रेन में ब्लीड होता है, उनको गट के प्रॉब्लम्स आते हैं। जो मिल्क मिलेगा, मदर्स का मिल्क मिलेगा, तो ये प्रॉब्लम 80-90% कम हो जाते हैं। और ये मिल्क बैंक, आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर गजल इज देयर, a special designed well-trained doctor is there for that milk bank. This is the only hospital in Pune or in India where the doctor is leading the milk bank. So I will request all of you or the people who are attending, please donate the human milk, which is very important, which is very precious, and that is the life insurance for the baby. If you want to give one gift to your baby and other baby,
मिल्क। हम हमेशा बोलते हैं कि 6 महीने तक मिल्क देना है, डेफिनेटली आप डोनेट भी कीजिए। ये डोनेशन आपका लाइफ लॉन्ग यूजफुल भी फॉर अदर बेबीज। ये एक सर्विस में बोलना चाहता था मिल्क बैंक का। दूसरी सर्विस में बोलना चाहता हूँ कि जो ऑल हॉस्पिटल्स में नहीं है, जो हम बोलते हैं कि न्यूबॉर्न और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर में बेड साइड अल्ट्रासाउंड होता है। यानी कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी सपोज कल एक डॉक्टर के ट्विंस बॉर्न हुए, वो प्रीटर्म है, वो 26 वीकर है और वो 800-900 ग्राम के हैं। अभी वो बच्चे की हार्ट फंक्शन कैसे कर रहे हैं, वो बच्चे के ब्रेन फंक्शन कैसे कर रहे हैं, वो बच्चे को हमने वेंटिलेशन में और चेंजेस क्या करना है, वो बच्चे का फेफड़े में अच्छा होने के लिए और कौन सी दवा देनी चाहिए। हम लोग ऑल द टाइम रेडियोलॉजिस्ट पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी बिजी। हेंस लास्ट 20 इयर्स से बेसिकली ये फील्ड बढ़ रहा है। इंडिया में 10 साल से ये फील्ड बढ़ रहा है। एंड not to tell, but I'm very proud myself that I'm leading Asia in this field, and we have written 7 books on the bedside ultrasound. We have published 54 publications on this ultrasound. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये ultrasound is going to be the future stethoscope for all doctors. और वो फैसिलिटी अपने NICU में है, PICU में है, and उसका फायदा अपने बच्चों को होने वाला है. So that is one of the things which is different from the other hospital, which I'm trying to say. जब प्रीमैच्योर बच्चा बॉर्न होता है तो हर एक को जो हेल्प लगती है वो होता है मदर टच, और वो मदर टच मिलता है हमारे सोशल वर्कर से। और हमारे यहाँ पे 3 सोशल वर्कर है जो 24/7 ऑन व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, ऑन फोन कॉल पे भी अवेलेबल है, और डेली 8 to 5 दे गिव सर्विसेज टू हेल्प द फैमिलीज। हर एक टाइम फ्रैंकली बोलता हूँ, डॉक्टर तो 5 मिनट बोल सकते हैं, 10 मिनट बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट डे आई विल से ऑल वेल डन, स्टेबल, गो अहेड, विल एंजॉय, लेट्स हैव हैप्पी, आई विल मीट यू एट फर्स्ट बर्थडे। ये दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट जो सोशल, जो किसी को सुनना है, अरे हमारा सुनो यार, ऐसे होते हैं मदर्स, फादर्स, स्पेशली ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, तो उनके लिए सोशल वर्कर का सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी सुबह मैंने मदर से बात किया, बोली मुझे प्रोग्राम को जाना है, आई जस्ट वांट टू रश, और 10 मिनट में मैंने कॉल खत्म कर दिया। शी वांटेड टू टॉक 20 मिनट्स। दैट इज माय मदर। और सेम थिंग हैपेंस विद द ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर। तो ये जो सोशल वर्कर हमारे पास है, ये जो सोशल काउंसलिंग है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट which is lacking in lot of places, which we have concentrated more। और डेली हमारे NICU में, PICU में 12 से 2 बजे तक 2 घंटा काउंसलिंग होता है। यानी कि हर रोज हर एक पेशेंट के बारे में आपको सब मालूमात मिलती है। एवरीबडी इज डॉक्यूमेंटेड, रिकॉर्डिंग, साइनिंग, वो ठीक है, बट उनको प्रॉब्लम्स क्या है? सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, उनके सोशल प्रॉब्लम्स, उनके एथिकल प्रॉब्लम्स, उनके एकेडमिक प्रॉब्लम्स और उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर वेरियस लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दे डू हेल्प। तो ये जो सोशल वर्कर जो टीम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टीम टू सपोर्ट अस। हर एक हॉस्पिटल में NICU होता है, PICU होता है, बड़े डॉक्टर्स होते हैं, सब होता है, बट जो ह्यूमन टच है, वी ऑलवेज टॉक ह्यूमन टच, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे NICU में 4 बेड ऐसे रखे हमने, उसको कॉल्ड डेवलपमेंटल सपोर्टिव बेड्स। अभी ये क्या कंसेप्ट है? ये न्यू कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपको बेड, आपका बेड भी उधर, आपका बेड भी उधर, आपका फैमिली का बेड भी उधर, आपका लैपटॉप भी उधर, आपका ऑफिस भी उधर, सो यू कैन वर्क फ्रॉम देयर विथ योर बेबी। That is the new concept we have started as a developmental supportive care, which is very important for the family care. नहीं तो क्या होता है, ओ ICU है, आप हाथ मत, अंदर मत जाओ, डोंट एंटर। सुबह आप नहीं बुलाते, 1 घंटा में आपको 10 मिनट जाएंगे सिर्फ, but then you are separating mother and baby. That concept we don't want, and hence the Sahyadri hospital has taken care as to make a special suits which is not available in the Pune city at anywhere, as a developmental supportive care beds for the whole family where they can work. That is the most important facility which we are providing in this Momstory, in this child care, which is very important. What we are trying to say now is, देखो भाई, हमको तो एक बच्चा, और यहाँ ये जो रूम है
ये रूम में भी सबको एक ही दो ही बच्चे. If I would have born in generation, तो मैं नहीं होता. I'm a third child. बराबर? तो हर एक बच्चा प्रेशियस है और हर एक बच्चा सबका अच्छा होना चाहिए. किसी को स्पोर्ट्स में अच्छा करना है, किसी को एकेडमिक्स में अच्छा करना है, किसी को कुछ ना कुछ अच्छा करना है, क्योंकि हर एक मदर को लगता है माय बेबी इज द बेस्ट और वो बेस्ट ही होता है. तो इसके लिए वी हैव टू प्रोवाइड वन ऑफ द बेस्ट चाइल्ड केयर और इसलिए वी हैव 24 डॉक्टर्स ऑफ अ चाइल्ड केयर व्हिच इज अवेलेबल, which is a more than any hospital where we could see 6, 8, 10 doctors. So the team of the doctors is the most important thing, and our theme is very simple: share the knowledge, take care of that baby by teamwork. And that teamwork is with us as a child department, where a lot of my members are there and they are helping us. एक डॉक्टर या एक मेंबर से बहुत कम होता है. Let's develop a team. Let's develop. देखो इन्होंने फुला में कितना 10 करोड़ कितने करोड़ मालूम नहीं मुझे. I don't know numbers. Lakhs. तो हम लोग अभी इंडिया में तो नंबर्स में बात तो लैक्स एंड करोड़ में बोलते हैं. आई वॉज टॉकिंग विद अब्रार सर कि भाई प्रोजेक्ट क्या है, नहीं हो जाएगा 10-15 करोड़ का हो जाएगा. सो वी टॉक इन करोड़ ओनली. तो हम लोग जो है टीम वर्क में बिलीव करते हैं. सो वी एज अ चाइल्ड डिपार्टमेंट एज अ बिग टीम, बिग सपोर्ट, यू कैन टेक हेल्प ऑफ देम एनी टाइम. अदर सर्विसेज तो है, अदर सर्विसेज तो होना ही चाहिए. न्यूरोलॉजी होता है, कार्डियोलॉजी होता है, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स होता है, नेफ्रोलॉजी होता है, जेनेटिक्स होता है. वो तो एनसीसी सर्विसेज डॉक्टर तो देना ही पड़ता है. बट एज अ फैमिली जो कोई भी बच्चा आएगा, he should be satisfied. And one more concept they are starting is basically they are going to provide the taps to the PICU so that जो stressful child है वो at least जो हम लोग बोलते हैं कार्टून मत खेलो, वो उधर PICU में खेल सकता है. So at least that can be done. That will be the better option. As a doctor हम बोलते हैं मोबाइल मत दो, कार्टून मत देखो, फलाना मत करो. but वो child का सोचो तुम कभी. As a doctor हम उतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं. जब तक ये कोविड आया, हर एक के बच्चे कोविड पे टैब पे चला गया, हर एक का बच्चा मोबाइल पे चला गया, हर एक का बच्चा लैपटॉप पे चला गया. Now that time we accepted. क्या करेंगे, चॉइस ही नहीं था. And the kids have done fantastic. ऐसे नहीं कि kids have not done fantastic, they have done good. तो हम लोग ने भी एक्सेप्ट करना चाहिए कुछ चीजें. And that's what we requested. All the PICU beds, they are going to provide the taps to entertain them without these other additional services. Thank you. Thanks. Fantastic vision. And I must say that we humans, whenever we want to enroll at any hospital, जब हम पैसे भी देते हैं, हम सबसे पहला सवाल पूछते हैं नया क्या है. And I think you guys have really thought out of the box and got very good concepts. And also another thing is, हम सब लोग अन्नदान में विश्वास रखते हैं, but वो अन्नदान हमारे दिमाग में सिर्फ रोटी सब्जी तक जाता है, human milk क्यों नहीं? And I think that is what the doctor just said, that donate human milk, which is really the best thing that we young mothers can do. Dr. Vaishali Chavan, आपके लिए ये सवाल था कि generally there is a woman who is pregnant and a very normal pregnancy going on, suddenly it gets to high risk pregnancy. ऐसे काफी cases हम देखते हैं, तो ऐसे क्यों होता है and how can we avoid it? Right, that's a very good question, Sonia ji. Everybody wants, सब चाहते हैं कि normal pregnancy हो जाए, सब कुछ normal रहे during the pregnancy, delivery normal हो जाए. सब भी चाहते हैं कि normal का ज़माना है, normal होना चाहिए, पर ऐसे हो नहीं रहा है. And what is the reason for that? So how to prevent it? Prevention starts from preconception, right from the beginning. जैसे कि pre-Momstory सुप्रिया मैम ने कहा, वैसे before you plan your pregnancy, there are certain things that you should look at. First of all, the age. Now earlier in the previous generations, when we were younger, we were told that before you touch 30, have 2 children. But now we say at least have 1 child before you touch 30. But in today's generation, what we are seeing, there's a change in the past 20 years. The age of marriage is increasing. Now women are reaching very high posts, holding powerful positions. That all is very commendable. But at the same time, girls are getting married later and later and planning pregnancy later and later. So once you cross 30 and then have pregnancy, it's termed as elderly. And as you cross 35, the risk of pregnancy complications keeps on increasing. So my request is plan your pregnancy. काम तो जिंदगी भर करना है, but plan your pregnancy, prioritize your pregnancy, earlier the better.
Second thing is a weight, excess weight, more BMI, all these things also lead to complication, blood pressure, diabetes during pregnancy and so on. If there's any pre-existing problem, like some people have heart disease or there's anemia, there's diabetes, renal disease, so get it treated before you plan pregnancy. Fourth important thing is folic acid supplementation. Even before you plan your pregnancy, if you take folic acid 3 months before planning pregnancy, then surely this baby is going to be more intelligent, more healthy. And healthy nutrition, exercise, all these issues are very important. Nowadays we see a lot of youngsters are into smoking and vaping and alcohol, and drinking has become very common. You know, it's not just weekend drinking. Nowadays the youngsters which we see, earlier it was quite rare, but now it's an in thing. Every youngster, it's partying, drinking. So if you're planning for pregnancy, then you should completely stop, smoking, drinking, and all these things, because it's going to harm your baby, harm your health, and there are going to be complications during the pregnancy. So once you become pregnant, continuous antenatal care, visiting the gynecologist frequently is very important. Another thing we see nowadays is when there's older age group, we find that they are unable to conceive. Sometimes they have fibroid uterus, they have septed uterus. So we at Sahyadri have a laparoscopic team. We do a lot of good laparoscopic work where we do laparoscopic myomectomy, excision of the myoma or excision of the septum hysteroscopically, and so on, which is known as fertility enhancing surgeries. And I am at Hadapsar unit of Sahyadri, and we have an entire very well equipped laparoscopic center. In our team, I can see Dr. Archana, Dr. Praneeth. So we do very good laparoscopic work. And it's laparoscopy is very easy. It has a lot of advantages, like it's a quick surgery, discharges within 24 hours, within 6 hours patient gets up, starts walking. So the loss of work, the post-op pain, all these things are very less. Now coming back to this present pregnancy, when you say this is a normal pregnancy, so regular checkup with the gynecologist, regular sonography, test, investigation, following the advice regarding nutrition, exercise, all this is going to help, and it helps us to pick up. If there's any high risk factor, we pick it up immediately and we treat it. So all these, following these general measures will give you a healthy pregnancy and a healthy outcome. Great, doctor. Thank you so much. My next question is to our IVF expert, Dr. Aarti Rapol, because we were just talking about people getting married at a higher age, and then pregnancy does become difficult. So, and generally after that, people do choose IVF as a solution. So, how much time does IVF take to show result? Yeah, basically when you said to show results, I'm happy for that, because everyone, when they come to us for IVF, their expectation is 100%, because हम लोग IVF कर रहे हैं, this is the last option, and that's what they have. But I would like to say that at our center we have the best success rates, and there is something called as cumulative success rate. So if we do one cycle at our center, it's about 46 to 47%, and if we do a second cycle, it goes up to 75%, and if the lady undergoes 3, almost 85% of the women conceive in 3 cycles. So there are the rest of 10 to 15% who have a lot of other complications, who might need more cycles, they might need some other options. So with this technology, because most of the success rate all is dependent upon how your lab is, and we at Momstory do have a very advanced lab, very expert embryologists, and all your protocols which are set that we have achieved excellent success rates. And I would say, as Madam always says, that there is to this date we see that no woman can stay infertile. By some or the other way, we make everyone pregnant. That's superb, very well said, doctor.
For the audience, just to let you all know that we have one good news and one bad news left. The bad news is that we just have one questions left each doctor. But the good news is that still we all are together and enjoying this show and getting more of knowledge. Dr. Supriya Puranik, I have a similar question which I asked Dr. Pradeep, that how is Momstory different than other mother and care child hospitals? You know, because it's your vision, you've really worked on it, so I want to know from you. How Momstory is different. Okay, how Momstory is special. सुनिए जी, हम ऐसा नहीं पूछते कि ऐसा नहीं बोलते कि अरे मैं कितनी सुंदर हूँ, अरे मैं कितनी स्किलफुल हूँ. ये दूसरों ने कहने वाली बात है और मुझे लगता है कि Momstory आने वाले दिनों में, सालों में बता देगी कि हाउ Momstory इज डिफरेंट. बट मैं ये डेफिनेटली बताना चाहती हूँ, एक मिसाल के तौर पे मैं जस्ट छोटी सी स्टोरी, मुझे मालूम है वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट एक बताना चाहती हूँ ऐसे चीज़ की. ऐसे सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हम कैसे डिफरेंट है. मेरी केनिया की पेशेंट थी, 38 इयर्स ओल्ड, बेबी नहीं था, उसकी 3 बार सर्जरी करवाया गया था उसके ऊपर, क्योंकि उसके यूट्रस में, बच्चादानी में बड़े बड़े फाइब्रॉइड की गठाने थी. तो एक सर्जरी खड़ा वर्टिकल किया था, एक ट्रांसवर्स किया था, तो मार्क उसके प्लस जैसे साइन उसके पेट पे था. 2 सर्जरीज और तीसरी एक सर्जरीज हुई थी और वो केनिया में थी. उसकी बहन मेरी पेशेंट थी. उसकी बहन इसके सारे रिपोर्ट्स लेके मेरे पास आई. पहले तेरे डॉक्टर से पूछो कि आप मेरे केस लेने वाले रहोगे तो ही मैं इंडिया आऊँगी, अदरवाइज मैं नहीं आऊँगी. तो वो उसने वो रिपोर्ट्स लाए. बड़ा सा फाइब्रॉइड था, एडिनोमायोटिक यूट्रस था, उसको बेबी भी नहीं था और फिर उसको बेबी भी चाहिए था. और ये यूट्रस मीन्स हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसको इतना सारा गहरा दर्द होता था, बहुत सारा ब्लीडिंग होता था. तो आगे क्या करना है? तो मैंने बोला हाँ भेजो, क्योंकि केनिया में उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था. तो वो आ गई. वैसे तो वो उज्जैन से है, होटल में रहे थे, और वो पहले जब मेरे पास आई तब दिखाई दिया शी इज 8 months प्रेग्नेंट, इतना बड़ा पेट लेके आई थी. ठीक है, अभी हमने उसको बता दिया कि ये यूट्रस में 8 months प्रेग्नेंट जैसा यूट्रस जिसमें अब एंडोमेट्रियल कैविटी पूरी डैमेज हुई थी, उसमें तो बेबी नहीं हो सकता. तो बेबी के लिए हम आपको सरोगेट मदर देंगे. शी वॉज इंडियन नेशनल, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको सरोगेसी हम इजीली करवा सकते हैं. उसके एग्स पिकअप कर दिए, उसके हस्बैंड के साथ उसके एम्ब्रियोज बना दिए, वो साइड में रखे हैं, उसके लिए सरोगेट सिलेक्ट कर दिए हैं, वो भी है. लेकिन उसके खुद के प्रॉब्लम के लिए हमने ओपन सर्जरी का ऑप्शन दिया, क्योंकि इतना बड़ा यूट्रस था कि आप लैप्रोस्कोप अंदर डाल ही नहीं सकते थे. तो जब मैंने ओपन करना शुरू कर दिया, जस्ट यूट्रस वाज स्टक टू द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, पेट को चिपका हुआ था. जैसे हमने उसको कट किया तो शी ब्लेड लाइक एनीथिंग. तभी वो हाइपरटेंशन में चली गई. हमारे पूरे बदन में 5 लीटर्स ब्लड रहता है, एंड फॉर जस्ट ओपनिंग द एब्डोमेन शी ब्लेड 500 ml ब्लड इसने तभी कर दिया. तो ये तो बहुत ही डिफरेंट था. तो मैंने वो ऐसे ही क्लोज किया. हस्बैंड मैं जैसे मैं बाहर आई, हस्बैंड को बताई कि मैंने ऐसे ही क्लोज किया है, हम शाम में वापस उसकी सर्जरी करने वाले हैं. लेकिन वो तो बेचारा रोने लग गया कि मेरे बेबी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेबी को बचाओ. फिर भी इतना बड़े हॉस्पिटल जो बोलते हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्यों होना चाहिए, तो मैंने कैथ लैब को इन्फॉर्म किया और पूछा, क्योंकि मुझे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करना था. तो कैथ लैब में एक सर्जरी चालू थी, एंजियोप्लास्टी चालू थी. वो खत्म होने के बाद हमने इसको ले लिया. उसकी यूट्रस की तरफ जाने वाला सारा रक्त का प्रवाह हमने बंद कर दिया. 4 घंटे में वो उसकी यूट्रस का ब्लड फ्लो पूरा स्टॉप हो गया. और इवनिंग में हमने वापस उसको ओपन कर दिया, उसकी सर्जरी करना शुरू कर दिया. पीस मिल के टुकड़ों में वो यूट्रस निकालना पड़ा, बट वो सर्जरी सक्सेसफुल हो गई. सर्जरी के बाद वो जो स्पेसिमेन था, जो टुकड़े हमने निकाले थे, छोटे छोटे बिट्स निकाले थे, वो वे करने के बाद पता है वो 3 kgs था यूट्रस. 3 किलो का यूट्रस था. जितना बेबी रहता ना, बेबी का हेल्दी बेबी का वेट उतना था. तो Momstory
एक बड़े हॉस्पिटल का पार्ट है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में, हमारे अपनी हॉस्पिटल में मॉमस्टोरी अभी जो कहने वाले हैं हम, उसमें महीने में 2 से 3 पेशेंट सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल से रिफर होते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी NICU फैसिलिटी नहीं है, ICU नहीं है, ब्लड बैंक बैकअप नहीं है, एंड मेजरली ICU। क्योंकि ये पेशेंट जब सीरियस हो जाते हैं तो उनका ICU का बैकअप होना जरूरी होता है। तो हमारे मॉमस्टोरी में फर्स्ट फ्लोर में मॉमस्टोरी है, लेकिन जब पेशेंट कभी से सीरियस पेशेंट रेफर हो जाती है तो हम 4th फ्लोर पे वो मैनेज करते हैं जहाँ ICU फैसिलिटी है। तो यही अपना एक स्पेशलिटी है। और दूसरी मैं बात कहना चाहती हूँ, मॉमस्टोरी इज नॉट अ इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉमस्टोरी इज अ मूवमेंट। और ये होने के लिए बैकबोन जो हमारी टीम है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे सारे डॉक्टर्स जो स्किलफुल है, डैशिंग है, डेयरिंग है, उसमें डॉक्टर अनुप्रीता है, उसने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वो करती है, डॉक्टर समीप है, वो सारे इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक्स संभालता है, डॉक्टर सुषमा है जो इनफर्टिलिटी देखती है, डॉक्टर रीतू, डॉक्टर वेदा वाटर बाथ करने वाले हैं। तो ये सारे डॉक्टर्स हैं। वैसे भी हड़प से सह्याद्री में डॉक्टर आरती है, डॉक्टर वैशाली है, डॉक्टर मनीषा है, डॉक्टर अर्चना है, प्रणीत है। ये डायनेमिक डॉक्टर की टीम अपने पास है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नर्सिंग। जो हमारी नर्सिंग टीम है मॉमस्टोरी की, सोनाली, सिस्टर माया के अंडर हमारे इतने अच्छे नर्सेस हैं, वो नर्सिंग का मीनिंग जानते हैं। नर्सिंग का मीनिंग ये नहीं है सिर्फ इंजेक्शन लगाना, दवाइयाँ देना, तो वो नर्सिंग का मीनिंग जानते हैं। पेशेंट केयर अटेंडेंट है जिनको हम अपने मॉमस्टोरी में मौसी नहीं बोलते, मौसी करके नहीं बुलाते, हम नाम से बुलाते हैं। ये हमारा कल्चर है, तो नाम से बोलते हैं। लेकिन ये पेशेंट केयर अटेंडेंट जो है वो सारा केयर तो लेते ही है, लेकिन घर जाके आपको क्या करना है, और घर जाके आपको तकलीफ हुई तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे ज़रूर फ़ोन करना। ऐसी उनकी संस्कृति है। तो डेफिनेटली ये टाइम कम है। मेरे एम्ब्रियोलॉजिस्ट की टीम अपनी अच्छी है, हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट और वेलनेस एक्सपर्ट जुड़ी है, महिमा बख्शी है। इससे हमारी इतनी हमारी ये स्टोरी जो है इतनी स्ट्रांग हो गई है, तो आने वाले सबके मैटर्निटी में वो खुद की स्टोरी लिखेंगे। Absolutely, it's always the team that comes together and which gives you the strength to make something successful, ma'am. And I really appreciate आप बार-बार हर किसी का नाम ले रहे हो because that is the value that Sahyadri and Momstory has together today. And just one thing that clicked my mind, and I think we should really have a big round of applause for all these doctors because इनकी knowledge, the way they talk, अगर आपने notice किया होगा, Dr. Purani, okay, now this is a little funny. We've just had a little serious discussion, so to change the diversion, she's saying, हाँ 3 किलो का ये निकला, छोटे-छोटे टुकड़े निकले, फिर हमने उसको इसमें मिक्स कर दिया, जैसे हम कोई भाजी बनाते हैं ना घर पे, जैसे का पनीर का तड़का दे दिया, पनीर के टुकड़े कर दिए ना, and I'm like wondering, wow, so much of knowledge, so much in depth, and there's so much to learn, ma'am. So thank you so much for sharing this entire details. Dr. Pradeep, of course, your field. At times the doctors have gained such degrees कि उनके नाम भी हम बराबर pronounce नहीं कर पाते हैं. So a lot of times we are live on Pula and I'm like, अच्छा इसको कैसे pronounce करते हैं? So even doctor for you, it's called neonatologist. मैं बहुत practice करके आई थी आज. So we know pediatric, but that's another term, of course. So doctor, just would like to know because ma'am has given the entire journey about a pregnant woman. So coming to a child, what are the things that a mother should keep in mind to take care of a newborn baby? Okay, I'll start the first. The problem what as Indians we have suffered. As a pediatrician, we know because I'll just give a little bit the journey of Indian medical field. 40s में हमारे pediatrician थे, simplified practitioner. When I was born, मेरे खुद के family physician थे. I was born in village and वहाँ पे physician आते थे, उसको हम लोग general MBBS doctor बोलते हैं. उसके बाद 70s में we have a specialist doctors. उनको बोलते हैं हम लोग MD doctor, MS doctor. That is what we called as a pediatrician. बट जब हम लोग एक स्पेशल केयर होता है
यानी कि हम लोग प्रीटर्म बच्चे बात कर रहे हैं, हम लोग एनआईसीयू इंटेंसिव केयर की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें सुपर स्पेशलिस्ट लगते हैं। तो हम लोगों ने आफ्टर एमडी 3 साल का और एडिशनल हमारा सुपर स्पेशलिटी कोर्स होता है, which is a neonatology course which we do and which को neonatologists बोलते हैं। तो हम लोग जो डेफिनेशन हो जो होता है कि भाई these are neonatologists means they are super specialists in the field of newborn care। न्यूबॉर्न केयर क्या होता है? जब बच्चा बॉर्न होता है till 28 days, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन ऑफ लाइफ होता है, बिकॉज वहां पे सबसे ज्यादा मॉर्टेलिटी होती है। आप सोचेंगे जब हमारी डेथ होती है और अब जब बॉर्न होते हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट फेज है। सबसे प्रॉब्लम 10 साल या 20 साल पहले इंडिया में जब 1000 बच्चे बॉर्न होते थे तो 100 बच्चे उसमें से दे आर डाइंग, उसको हम लोग न्यूनेटल मॉर्टेलिटी बोलते थे। आज अच्छी बात यह है कि हम लोग सपोज हम लोग पुणे सिटी में बैठे हैं तो 1000 में से सिर्फ 10 बच्चे डेथ होती है, 990 सर्वाइवल हो रहे हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग एंड दैट इज द फील्ड कॉल्ड एज न्यूनेटोलॉजी। दैट इज अबाउट द फील्ड व्हिच आई एम टॉकिंग। नाउ द क्वेश्चन मैम हैज आस्क्ड इज अबाउट मदर ने क्या करना चाहिए। मैंने इसका आंसर दे दिया है, मदर ने गॉड बनना है, बस दूसरा कुछ बनना नहीं है। मदर ने फेसबुक नहीं देखना है, मदर ने गूगल नहीं देखना है, मदर ने ट्विटर नहीं देखना है, और मदर ने हस्बैंड को तकलीफ नहीं देना है, मदर ने हस्बैंड के ग्रे हेयर्स नहीं करना है, हस्बैंड को भी थोड़ा प्यार से बात करना है, मदर ने उतना ही करना है, और पैटर्नल लीव बढ़ाना है। मैं इनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ अबरार सर को कि आप भी थोड़ा सा हमारे लिए कीजिए, हमारे पैटर्नल लीव को थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए, 1-2 दिन के लिए मत कीजिए, उसको थोड़ा सा 15 दिन दीजिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हम भी फादर बन गए, हमें भी थोड़ा खुशी हुई है, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट आई रिक्वेस्ट टू इंडिया, not only to all but India, to increase that paternal leave so that that father can take care of mother। क्योंकि अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, अच्छी बात है। हमारे 4 पिलर्स हमारे साथ हमेशा होते हैं, मदर फादर मदर इन लॉ फादर इन लॉ। मदर इन लॉ फादर इन लॉ की चॉइस नहीं होता है, मदर फादर अपने ही होते हैं। तो ये 4 लोग तो होते ही है जो हमेशा अपने साथ होते हैं, बट उसके साथ एक जो फादर है उसको भी लीजिए, उसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंस दीजिए। तो ये एक रिक्वेस्ट मैं बोलना चाहता हूँ। तो मदर को गॉड बनना है कि क्या करना है? सिंपल सा रिलैक्स रहना है। मदर रिलैक्स रहेगी, मदर अच्छा खाना खाएगी, मदर अच्छा रेस्ट लेगी, तो मदर को मिल्क आने वाला है। और मदर मिल्क इज द बेस्ट इंश्योरेंस ऑन द अर्थ। आप कितने भी पैसे लगाओ, कितना भी बड़ा इंश्योरेंस लो, आप कितने भी वैक्सीन दो, आप कितना भी बड़ा डॉक्टर देखो, लेकिन मैंने माँ का दूध पिया है इसलिए मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। दैट इज व्हाट टुडे आई एम हियर, दैट इज द मदर्स डे, दैट इज द मदर व्हिच इज द गॉड। व्हाट आई एम सेइंग दैट मदर इज द गॉड, मदर को गॉड बनना ही है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। मदर को गॉड बनने के बाद ही हमारा बच्चा अच्छा होता है, उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे पास तुम कमाओ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम मेरे ओपीडी में कमाओ। कब कमाएंगे आप? कि आप जब गॉड बनेंगे, आप जब ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, आप 6 महीना किसी का सुनने का नहीं, किसी का सुनने का नहीं। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप कभी ओपन करना ही नहीं, कभी ओपन करना नहीं फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप व्हेन यू आर लैक्टेटिंग। वो बोलेंगे कान में ये डालो, नाक में ये डालो, आंखों में ये करो, काजल लगाओ, फलाना करो, कुछ मत करो, व्हाट्सएप बंद करो और मदर को गॉड बनना, यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू। I think we should have a round of applause because sir, a very different and lovely way of explaining it to everyone in a simple language, God बनना है। But आपने कहा Facebook नहीं देखना है, सर हमारा ग्रुप कौन देखेगा फिर? Okay. I think social media fantastic. The change is occurred in social media. But देखो, जब सोशल मीडिया का ज्यादा यूज होता है तो प्रॉब्लम होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? The right way. ज्यादा यूज कोणती बी चीज, मराठीत म्हणे तुकाराम महाराज म्हणतात, ऊस गोड झाला म्हणून मुळासकट खाऊ नका, बरोबर आहे? 2 मिनिटापूर्वी जस्ट मोबाईल काढला, हाँ प्लीज टेक्स्ट मी असं लिहून पाठवलं। दैट्स ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया। एक यहाँ पे हम लोग इंटरव्यू चल रहा है और हम लोग लिख रहे हैं प्लीज टेक्स्ट मी, दैट्स नॉट यूजफुल। 20 साल पहले मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, माइंड भी शांत था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना व्हाट्सएप था, सिर्फ मदर थी। एंड हेंस हमें बोलना है कि मदर को गॉड बनना है। दैट इज व्हाट आई रिक्वेस्टिंग। यूज करो लेकिन कम करो हर एक चीज। अरे बच्चा रो रहा है, व्हाट्सएप
व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, अरे बच्चे ने आज थोड़ा सा 10 मिनट से नहीं 12 मिनट में फीडिंग लिया, 8 मिनट में फीडिंग लिया, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे, इसके लिए नहीं जाना है। आपके डॉक्टर से बात कीजिए, काउंसलर से बात कीजिए, लैक्टेशन कंसल्टेंट से बात कीजिए प्लीज। यस, सोशल मीडिया इज अ फैंटास्टिक बट ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया, और जिनका नॉलेज नहीं है वो लोग तुमको गाइड करते हैं, दे नीड स्टफ, दे नीड स्टफ। हम लोग बोलते हैं प्लीज, मैं तो हमेशा बोलता हूँ भाई तुम्हारा जो गूगल नॉलेज है ना उधर रखो, मुझे जो कंसल्टिंग देना है ना वो मेरा कंसल्टिंग है, और जो तुम मैं काउंसिल कर रहा हूँ आपको, मैं आपको ट्रीट कर रहा हूँ उसके लिए, नहीं तो फिर गूगल पे क्यों आना मेरे पास। What I'm trying to say that please whatever we use, whatever we do, use in a specific format so that we should get a healthy baby. Absolutely, sir. Absolutely. As I said, you know, हर एक चीज का pros and cons होता है, social media का भी है. But you know, even on our group, just to add, sir, we don't allow anybody to ask कोई भी घर के उपाय, कोई भी दवाई, कुछ भी नहीं on social media. We tell them you have to visit a doctor because it's not safe. And ma'am, in fact, my question to you is that, you know, something what sir said about social media, but this is different over here. You know, because sir said very true, you know, that a lot of people are tech savvy, they check Google, they will surf, but I want to ask you, do you use social media to spread your knowledge? Sonia, yeah. Because I know what you do. As me, मैं सोशल मीडिया ये नाम सुन के मुझे थोड़ी सी हंसी आती है और मैं पीछे चली जाती हूँ। जब 4-5 साल पहले की बात है, मेरी बेटी कहा करती थी मैम मॉम तेरा फेसबुक पेज करेंगे। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। मेरे लड़के ने बोल दिया इंस्टाग्राम करेंगे, मैंने बोला बिल्कुल नहीं। उसके 2-3 साल के बाद मेरे जो डिजिटल मेरा प्रेजेंस कराने वाली जो लड़के हैं सर्केडियन, वो उनके साथ मैं मिली। उन्होंने मुझे बता दिया कि इसका इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है, कि आप ओपीडी में पेशेंट से कितनी बात करोगी, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, लेकिन आपका जो सारा नॉलेज है वो पेशेंट तक जाने के लिए आपको वीडियोस बनाने ही चाहिए। somehow they got convinced me और मैं कन्विंस हो गई। एक बार डॉक्टर निखिल जो सर्केडियन है उनका, उन्होंने कह दिया मैडम सिर्फ 40 वीडियो चाहिए मुझे, प्रेगनेंसी वीक बाय वीक। मैंने बोला 40? हाँ 40, ये नई शुरुआत थी। और लिटरली सोनिया जी मैं बताती हूँ आपको, हर एक मेरा पेशेंट जो कंसीव होता है वो वीक बाय वीक सीरीज विद हस्बैंड एकदम रिलीजियसली देखता है, और पेशेंट ओपीडी में आके बताते हैं वो मॉमीज कि मैम आपने 12वें हफ्ते में जो बात बताई वैसे ही हुआ। मैम नोजेस नेजल ब्लीड के बारे में आपने बताया था और 1 हफ्ते बाद मुझे शुरू हो गया। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो हम ओपीडी में बता नहीं सकते, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, और मैं खुश हूँ कि जितना मैंने पढ़ाई किया है, जो पढ़ाई मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ वीडियो के माध्यम से, और हर महीने में 5 मिलियन to 6 मिलियन व्यूज़ मिलते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ ये सही चीज़ें, क्योंकि मैं जब बनाती हूँ मैं पढ़ के बनाती हूँ, रेफरेंसेस लेके देखती हूँ और बनाती हूँ, तो राइट इन्फॉर्मेशन दे आर हैविंग। इससे मुझे बहुत ही मैं खुश हो जाती हूँ जब इतने मिलियंस व्यू देखती हूँ, और आई एम सो वेरी हैप्पी फॉर दैट। Superb, superb, ma'am. That's the right use of social media, I would say, spreading knowledge to the audience who would need it. I think we've had a fantastic session, but it became very serious in between. So, you know, audience, these are doctors, right? We always feel they are very serious, they are only doing their job. And I have a little small rapid round, which is fun elements. And these are instant questions which you all have to answer, doctor, okay? You have to be absolutely true. Okay. Agree? गीता पे का सब हाथ रखते हैं। Absolutely true. Okay, so the ladies can first take the mic because my question to you ladies, as it's Mother's Day today, I'll ask the question, then one by one you all three can answer, okay? It's more of, you know, guilt questions, you know, generally लोग बहुत कहते हैं कि आप मदर हो, ये हो, तो कितने बार हमें खुद को गिल्टी होता है, तो आज हम वो रियलाइज करेंगे। My first question is that
have you ever felt guilty when you couldn't attend an annual day when your kid is performing in the school? Multiple times I have felt guilty, and it so happened that my husband always attends, and when the kids are small, the teachers know them by name, and I really felt embarrassed when I went. By chance I got time and I went, and she didn't recognize her, and the teacher was like, how come you never come? So these surprises do happen for, I think, all the working women, and that guilt is always there. Ma'am? Absolutely nahi. Nahi. Superb. Because my kids, they were mature enough to understand me. बहुत ऐसा कुछ हो जाता था जो मेरी पहली बेटी जब हुई तब 10वें दिन मैं मेरा डीजीओ का एग्जाम लिखने गई थी और 1 महीने के अंदर मैंने सांगली मैंने प्रोसीड किया था मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए और जब उनको समझ इनिशियल डेज में शायद उनको लगता रहेगा कि नहीं हमारी मॉम हमारे लिए टाइम नहीं देती है लेकिन बाद में जब उसको उनमें समझ अकल आई तब उनको मालूम है माय मॉम इज My mom is different and my mom is different from other mom. जैसे बता दिया अपनी आरजे ने वैसे ही मेरी बेटा और बेटी दोनों कहते हैं कि मॉम वी आर प्राउड ऑफ यू. So nice to hear that, ma'am. Sonia ji, that's a difficult question because as a mother, that conflict is always there. You want to be there for your child, you know, at every point at school, at their functions, at the performances. But practically, it's not possible. And especially when you have a girl child. I have a girl child. She's 23 today, but today also she's a very clingy girl child. And but at one point she realized when her school called me and invited me and I gave her speak on adolescent health and all that. We give these talks to 9-10 standard girls. And when she saw me on the dais giving a talk and then she realized, she said, yes, Mama, you continue. I won't bother you anymore. You continue. So as mothers, that guilt is always there. Hello, so nice. In fact, I have just one more question for you people, ma'am. Generally, you know, mothers, you know, like you're a working professionals, multitaskers, तो कभी गुस्सा आ जाता है, कभी ऐसा हुआ है कि आपने बच्चे को मार दिया है और फिर मारने के बाद आप एक जगह ऑफिस पहुंच के आप हॉस्पिटल पहुंच के बहुत रोए हो कि ओ शिट मैंने क्यों किया? मारा नहीं, but of course डांटा तो है. सच्ची? Yeah, and I felt bad about it. And talk to them again, and you know they forget things soon. That is a good thing. So they and it's always good to talk to them what you felt at that moment. Nice, ma'am. डांटने का मौका ही मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं घर में रहती नहीं थी. मैं जब कराड़ थी, मेरे स्मॉल टाउन कराड़ है मेरा, तो वहाँ मैं पेरिफेरल सर्जरीज करती थी तो 40-50 जगह मैं जाती थी. जब बच्चे उठते थे तब मैं घर से बाहर थी. बच्चे मैं जब घर आती थी तो बच्चे सोते रहते थे. 2-3 दिन तक मैं बच्चों को नहीं देखती थी. लेकिन मैंने क्या ऑप्शन बाद में किया, वो मेरे इन-लॉज उनकी सारी केयर करते थे, तो मैंने बोला कि अभी बच्चों के लिए घर का एटमॉस्फेयर, इट्स नॉट अ राइट एटमॉस्फेयर. इतनी सारी सीरियल्स होती है जिसमें क्या क्या बताते हैं, दिखाते हैं, और सारे जो संस्कार है ये अपने मेड्स के होते थे. तो मैंने एक डिसीजन ले लिया एट द एज ऑफ 8, जब मेरा बेटा 8 साल का था, कि उनको उनके पीयर ग्रुप में डाल दिया, यानी कि रेसिडेंशियल स्कूल में डाल दिया. तो जो कुछ होता था वो वही होता था, मैं सिर्फ प्यार करती थी. So you never got an opportunity basically to, तो आप कभी बुरे बने ही नहीं उनके. Superb, ma'am. मारा तो कभी नहीं, पर हाँ बच्चे लड़के को बहुत डांटा है. He is a very naughty boy, and in his 8-9 standard I realized he was not doing very well in school. That's when I realized that for my daughter, she is a doctor today, that I used to look after academics, you know, sit with her while she was studying. But the boy, I just neglected him. So when he was in 10, I cut down on my work, evening OPD, and I sat with him, and then he did well. So I realized, you know, as a mother, you know, when I was a young mother, that guilt was there, and you know, so much stress. But as we grow older, we realize that there's no need to be a super mom or a super woman
it's okay, you know, you delegate your work. It's not like I sat and taught him. I hired some tutors who saw that he did well, and today he's doing engineering. So delegate work, take people to help. You know, if you're at a workplace, like take more help. If there's something you cannot do, accept it, you know, go back. So there's really no need to micromanage, you know, just let it go. Superb, superb. You know, we should actually think about it because a lot of times we see creatives, super moms. यार क्यों बनना है super moms? यार start delegating work, you know, and that is you can also give time to yourself. So really loved it, ma'am. Sir, mic आप ही रखिए. Because now we've coming to you non-stop 2-3 questions, sir. खाना बनाना आता है? अच्छा मीन्स आई थिंक मैं 6 साल सिडनी में था तो करना ही पड़ता है. वहाँ पे कोई चॉइस नहीं है. वहाँ पे कोई मिलता नहीं आपको, तो खाना बनाना आता है और सब कुछ आता है. मीन्स सबसे अच्छा मैं नेचुरली महाराष्ट्रियन हूँ तो पोहा बना लेता हूँ. अच्छा नेचुरली थोड़ा सा चिकन कर लेता हूँ, कढ़ी कर लेता हूँ. खानदेशी खिचड़ी होता है. My native is from Khandesh, so I know the Khandesh खिचड़ी. तो I can survive and अच्छी चीज़ है. खाना नहीं बुलाया. Actually, I was just gonna say the proof will be you, doctor. डब्बे में कभी खाया है? Never. प्रॉब्लम क्या होता है ये भी बोलता हूँ मैं. जब आप सिडनी छोड़ जाते हो, आप इंडियन बन जाते हो, और आप इंडियन बन जाते हो तो आप खाना ही छोड़ देते, खाना बनाना, किचन में बनाना छोड़ देते हैं. तो 2007 से मैं किचन का जो डोर होता है उससे बाहर से निकल जाता हूँ. तो आई मस्ट एक्सेप्ट नाउ कि अभी कोविड टाइम में थोड़ा सा करना पड़ा, बट आई थिंक अभी नहीं कर पा रहा हूँ. Great, sir. So it's nice that even after being busy that you know you remove time. There's one next question. जब हम hotels में जाते हैं, 5 hotels में, हम माँ का फ्री का शैम्पू, बॉडी वॉश सब बैग में लाते हैं. सर आपने कभी फ्री के सैनिटाइजर? सब लाता हूँ. I'm telling very frankly, मैं 2019 के पहले हर सैटरडे संडे every city of India I was a faculty to give a lecture. I'm a very ऐसे नहीं मैं academics में बहुत आगे हूँ. बहुत I give lot of training programs and do. तो workshop लेता हूँ. Whether we agree or not, वो शैम्पू अच्छा लगता है, वो चीज़ अच्छी लगती है, और जो रिलायंस वालों ने कर दिया है फ्री में अच्छा लगता है, वो तो इंडियन माइंडसेट है तो करता हूँ एंड एक्सेप्ट. घर पे दवाइयाँ खत्म हो गई है, थोड़ा हॉस्पिटल से ले चलो. नहीं वो लकीली वो पार्ट नहीं है, because we have good setups and everything is available. Superb. So a last question, just a yes or no, okay? Have you got angry on a patient for asking too many questions? Yes or no? Sometimes. I think हमारे फील्ड का जो Sir, yes or no? No problem. Okay, and my last question, okay? कभी आप हॉस्पिटल लेट पहुंचे हो, but आपने आपकी अटेंडेंस ऑन टाइम मार्क की है? तो अभी होता नहीं है, तो जरूरत नहीं पड़ती है ऐसा कुछ. Fortunately ये कभी करना नहीं पड़ा. हॉस्पिटल मैनेजमेंट इज काइंड इनफ. मेरा थंब नहीं लेते. वो अबरार से तो मालूम है. No, I also don't need to do that. Great. I think we had a fabulous session today with such amazing speakers and panelists over here. And a big round of applause to them. Thank you so much. Thank you for removing time. My last question for everybody is, अगर आज सारे डॉक्टर्स यहाँ हैं तो सह्याद्री कौन मैनेज कर रहा है? Great. So let's have a group picture for closing this panel discussion. What an informative session this was, a very, very informative session. The viewer especially watching this particular panel discussion, I'm sure 80% of all your questions have been answered right here. Starting from planning your pregnancy, then moving on to the lady who is actually pregnant, and post-pregnancy what is to be done. I think every question is answered. Thanks to all the experts for sharing their knowledge, and they kept it so simple, crisp and short and very clear for everybody to understand those medical terms as well. Special thanks to Ms. Sonia for all those witty questions that you had here. Thank you for keeping it both balanced
on a very serious note also, and on a very funny note also. Thank you so much. Let's have a big round of applause for all the experts and the moderator, Ms. Sahyadri. Well, now moving on, we wanted to start the show by thanking the special moms present here today, those few very special patients of Sahyadri Hospital. And to felicitate them, I would once again like to welcome on dais Dr. Supriya Puranik, Director of IVF and Gynecology at Sahyadri Hospital. Ma'am, please welcome on the dais. Let's have a round of applause for her once again. And before calling a special mom, there is one very special and very dear and near to mom, a very, very cute and a very little princess present right here between all of us. It gives me honor to call on stage Miss Ishita Gaurav, 18-year-old first test tube baby of Satara district, and parents Mrs. Rajni and Ashok Gaurav. Let's have a round of applause for them. A very first IVF case performed by Dr. Puranik 18 years ago in Satara district, and she's right here with us. Mother, Mrs. Rajni, ma'am, I request you to please join her on stage. This is real important and a very, very proud moment for all of us. Can we have a very big round of applause for Miss Ishita Gaurav? She's a princess of Momstory, my first creation. Well, as we all know that she is an test tube baby, but there's something that I want to add on, and it will really make you all feel proud about her. She is ready to fly to Canada and take her further future studies in infertility specialist. It's her dream to become an infertility specialist. Congratulations, dear, and all the very best. Yes. Can I have a cordless mic on the stage? Ishita's mom, Mrs. Rajni. मैम आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी हमारे साथ थोड़ी सी शेयर करें. थोड़ा सा सेंटर में आ जाते हैं आगे. यस. हॅलो, मी रजनी गुरव. मी कराडमध्ये छोट्या गावात राहत असल्यामुळे जास्त मला बाहेर कुठे जाता आलं नाही ट्रीटमेंटसाठी. जेव्हा मी माझ्या ट्रीटमेंटसाठी बाहेर गेले तर तिथे मला सगळीकडे निगेटिव्ह आलं की म्हणजे माझा फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक होत्या आणि युटेरस ट्युबरक्युलर असल्यामुळे माझं टेस्ट ट्यूब बेबीसुद्धा सक्सेस होणार नाही असं सगळ्या डॉक्टरांनी मला सांगितलेलं होतं. पण जेव्हा मला मॅडमनी बोलवलं भेटायला की बाबा तुझे रिपोर्ट बघू देत मी, आणि त्या स्वतः माझ्याबरोबर सोनोग्राफीसाठी आल्या, आणि जेव्हा त्यांनी पाहिलं की सोनोग्राफी नंतर की माझ्या गर्भाशयाची गादी वेल कंडिशनमध्ये आहे, त्यावेळेला त्या स्वतःहून इतक्या एक्सायटेड झाल्या की मी तुला बाळ देणारच. आणि मी त्याच्यानंतर मला होप्स वाढले की मी आता आई होऊ शकते, आणि मॅडममुळे मला आई पण मिळाली. Like said, she is the glimmer of the last hope. मला मम्मीने जेव्हा सांगितलं की मी टेस्ट ट्यूब बेबी आहे, अँड शी टोल्ड मी एव्हरीथिंग अबाउट डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, आय डिसाइडेड ॲट दॅट मोमेंट I have to become a doctor and IVF specialist and walk in her shoes. I'll be honored to learn. Okay, thank you so much. Let's have a round of applause for both of them once again. Surya ma'am, I request you to please wait on the dais because we also have to thank our special moms. Thank you so much. Yes. Well, now calling special moms on the stage. We'll start with Miss Neha Nanavre. Mrs. Neha Nanavre, I request you to please come on the dais. Let's have a round of applause for our special moms who are the patients at Sahyadri Hospital. Last few, let's show some energy. I know everybody is really hungry.
request you also to please show some energy. We are one today, and let's thank every lady to take care. Moving on next, Rashi Dahikar. If Megu Zadar is present here. Okay, moving on to next, Bilari Rajput, Vice President of Business Management. Round of applause for one of the most beautiful and stunning lady walking on the stage. Come on, everyone! Request you to please take your seat. Thank you. Well, there were two more mothers who are not present with us right here today. I would just like to mention their name, Dr. Anjali Velkatli and Mrs. Anjali Velkatli and Mrs. Prajakta Pawar. They are not present here today. We'll make sure that their mementos and the special appreciations is going to be delivered to them. Well, moving on to next, we have a video. Again, I request everybody to please pay attention on the screen. This is the short video where we have all these special moms who've just come up on the stage. They've prepared small testimonials about their journey and how did they feel about the entire procedure. So I request everybody to please look at the screen. Can we have the video, please? 3, 2, 1. Hi, I'm Rashi Dahikar. I started my mom's journey from 2014. I have an elder sister, a daughter, and now I have a 4-month-old baby boy. My journey, it wasn't a simple one. The first baby that I had a miscarriage, and it was a very shocking one for me. During that mental time when I had been through a very bad phase, emotionally torn out and very depressed, I came to Sahyadri. And I met Dr. over here, Dr. Supriya, and she consulted me, and she was like, don't worry with anything, we'll do it all fine. And during this period, we understood that my daughter was very alone, you know, she couldn't go out, she couldn't meet her friends, she couldn't play outside. That's when we took another chance, and of course, we couldn't go anywhere else, and we had to come back to Dr. Supriya. And once you were here, she's like, Arey wow, congratulations and all. So, you know, that kind of connection we had with her because we go long back, 8 years now? So, yeah, that's how we have a special connection with her. So, with my son, I was in total comfort being a second baby, and because she knew my history, she knew all that I had been through. So that made it more comfortable for me to go with her over here. And once he was born, again she made a statement like, "Agar pattu wala yaris." And my baby was born on Christmas morning. So she came out as a Santa Claus to me. So yeah, it has been a very special journey for me with her, and I really, really want to thank her for that. Hello everyone, my name is Bilari Rajput. I work in IT industry. I'm working as the VP for Business Management IT, and I started my journey of mom in 2020. I never picturized myself that I want to be a mom in my life because I'm a career-oriented girl, and it just happened somehow, you know. One of my friends said that I got pregnant. Oh my God, we were jumping in the office, and she was like, "You also have to get pregnant." I was like, "What? Why? Just because you got pregnant?" And she was like, "No, Bilari, we are in the phase now. Yeah, we have to think about it. It's been 6 years to marriage, and I think we should think about it." So, you know, she randomly called to the hospital, to Supriya ma'am. She took an appointment, she booked a cab for me. Her name is Ramya, she is my best friend. And
and she pushed me to the hospital to the Supriya ma'am's cabin. So this is where the journey starts. This is where the fun starts for my life. I was like, okay, cool, come on. You have to do this once in a life, so you have to do it now. If not now, then when? So that's why I just went and I met Supriya ma'am finally. I never knew who is Supriya ma'am. Then after meeting Supriya ma'am, I felt graceful, I felt relaxed, I felt wow, that yes, I want to be a mom, after meeting the ma'am. These guys are the best for the maternity, for the pregnancy, for the delivery. Trust me, you can blindly come here and take the treatment. I love Supriya ma'am for this. Hello, my name is Pooja Padurwar. So basically, I'm Pooja Chidrewar, but I don't use that name because see, documentation and all funding. So Pooja Padurwar, and my husband supports it. So basically, my story is what I can say. The story is not complete yet. It is gonna be complete in June 20, hopefully, as Supriya ma'am said. कि 20 को डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा आ जाएगा. But looking at current situation and today's dance and all, babies could come early as well because you are very excited. If you are taking some time for yourself, you are being really bit selfish. If you feel that way, that is completely fine. At the same time, you are also a human. And as a mother, you are going to take care of your children, but at the same time, you need to take care of yourself. So being imperfect is perfectly fine. So just love yourself, love your life, just think about the future and just be happy. Happy mothers to all. Thank you. Yeah, hello everyone. My name is Prajakta and I'm a proud mom of a 1-year-old son. My journey with Sahyadri Hospital started in 2019 when we were planning to have a baby. And then it is till now we are very happy customer of Sahyadri. And important thing I would like to say is I would like to thank Dr. Supriya Puranik ma'am, and I would love to share my mom's story. It was a time when I was under labor for almost 18 hours. And my conception was natural and the whole journey was very natural and normal. So it was pretty clear that in my mind at least that I would have a normal pregnancy. But what happened during that period of time was like after 18 hours of labor there was some malfunction of the child's head and he couldn't come out of the canal. And that was the time Dr. Supriya ma'am asked me that we will have to go for a C-section. But I was very much disappointed that after going for in a labor of 18 hours, I wanted a normal delivery for myself. That was a time when Dr. Supriya ma'am explained in a very nice way and which was very convincing that it doesn't matter, Prajakta, whatever you have a delivery in a normal way or a C-section. The important aspect is your health and your child's health. We want a healthy child. And we will take whatever it takes. It doesn't matter if you deliver by C-section or a normal delivery. So that was the important thing that she said me at that point of time. And I delivered a child and he was very healthy. Initially he did not cry and I was very much tensed. But after a few minutes he cried and that was the happiest moment in my life. So I would actually give a piece of advice to all the moms out there. Don't enforce on a normal delivery or anything. It's okay. Go with the flow. Let the doctor decide. Trust on the doctors. Whatever they will do, whatever decision they will make will be best for you and your baby. So thank you so much. नमस्कार, मी नम्रता लोंढे. मी माझ्या प्रेग्नन्सीची जर्नी आज तुमच्यासमोर सांगत आहे. 17 सप्टेंबर 2021 रोजी मला कळले मी आई होणार आहे. जगातली सगळ्यात मोठी आनंदाची गोष्ट माझ्यासाठी ही होती. माझ्या सासरी, माझ्या माहेरी दोन्हीकडे खूप आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं. त्यानंतर थर्ड मंथमध्ये माझी सोनोग्राफी करण्यात आली. त्यावेळेस सोनोग्राफीमध्ये खूप साऱ्या कॉम्प्लिकेशन सांगण्यात आल्या. सोनोग्राफीचे तर डॉक्टर डायरेक्ट मला बोलले तू प्रेग्नन्सी कन्सीव्ह करू नकोस. मग मला सुप्रिया मॅडमचं नाव सांगण्यात आलं.
तेव्हा मी त्यांच्याकडे गेले, मॅडमने रिपोर्ट्स पाहिले, सगळं चेक केलं. मला म्हणले बेटा तू काही काळजी करू नको, डोक्यावर हात फिरवला आणि त्यांनी मला धीर दिला की काही टेन्शन घेऊ नको, तू ह्यामधून पार पडशील, बाहेर निघशील. त्यानंतर मग त्यांनी माझ्या 2-4 टेस्ट करून घेतल्या आणि त्यांनी जसं सांगितलंय त्याचप्रमाणे माझे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आले. परत मग जे टेन्शन सगळं होतं ते सगळं टेन्शन निघून गेलं. त्यानंतर मॅडमनी मला 9 महिने खूप सपोर्ट केला. 9व्या महिन्यात मला ॲडमिट करण्यात आलं. त्यावेळेस पण खूप सारे कॉम्प्लिकेशन्स होते. मॅडमनी C-सेक्शन करून माझी डिलिव्हरी एकदम व्यवस्थित केली. 2 दिवस मी हॉस्पिटलमध्ये होते. मॅडम स्वतः येऊन मला भेटत होत्या, बाळाला विचारत होत्या, स्वतः माझी काळजी घेत होत्या आणि मॅडमच्या स्टाफनी सगळ्यांनी मला खूप छान हेल्प केली. थँक्यू मॅम. These are the reasons why they are special moms today, on Mother's Day especially. Well, once again a very quick request to every mother sitting here and the one watching the videos. If you have your journey and if you want to share it with us, your story, we want you to submit your story to Supriya ma'am or on the Sahyadri Hospital page. Please do that because they are really very important to inspire and motivate every mother who thinks that it is a very, very difficult journey. It is difficult, but how to make it simple? Experts are sitting right here to help you that with. Well, quickly moving on. Now I would request Dr. Veda. Dr. Veda ma'am, I request you to please come up on the dais. She's a gynecologist and a water birthing consultant practicing from last 12 years. This is a very small session where Dr. Veda ma'am is going to explain us about the procedures and her expertise. Can I have the mic, please? Yes, ladies and gentlemen, can we have a round of applause? Last 15 minutes, not more than, I promise. Hello Pune, I'm so glad to come here. आणि दोन्ही मी मराठीतही बोलणार आहे आणि इंग्लिशमध्येही बोलणार आहे. कुठनं सुरुवात करू सांगता येत नाही मला, पण ही जी PO आहे माझी इथे, रिअली ज्युबिलंट स्पिरिट मी म्हणेन. आय नो हर ना लास्ट 30 years बहुतेक आहे ना. आणि मला तो दिवस आता आठवत होता की आमचा पहिला MBBSच्या पहिल्याच वीक आमचा बरोबर, आम्ही एका रूममध्ये रूम पार्टनर्स होतो. नंतर लग्न झालं, तिचं मुलं झाली, पण आमचा टच नाही सुटला. तेव्हा शी इज अ व्हेरी स्पेशल पर्सन. लोकांनी खूप खूप काय काय बोललंय इथे, पण शी इज समथिंग डिफरंट. आणि खरं सांगायचं तर मी पण तशी डिफरंट आहे, त्यामुळे ते आमचं जमलं. कारण वी ऑलवेज थॉट आउट ऑफ द बॉक्स. प्रोबेबली आमची धाटणी तशी झाली होती शाळेत. त्यामुळे नंतर माझ्याही लग्न झालं थोडं, पण मुलं होताना, तिची मुलं लहान असताना मी बघितलेली आहेत. आमचे पेरेंट्स एकामेकाला नोन होते, त्यामुळे असोसिएशन राहिलं. आणि नंतर आय गॉट माय चिल्ड्रन. आणि सडनली आफ्टर प्रॅक्टिसिंग 17 वर्ष ऑफ गायनेकॉलॉजी अँड ऑब्स्टेटिक्स, आय वॉज डायव्हर्टेड डिवाइनलीच म्हणायला लागेल. कारण आपले नॉर्मल हिस्टेक्टॉमी नॉर्मल सगळं करत होतो 17 वर्ष, आणि कंटाळा आला खरं सांगायचं तर त्याचं पुढे काय. आणि देन आय वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ स्वीडिश लेडी टू वॉटर बर्थिंग. आणि मी म्हटलं अरे, ती क्लिप्स बघितली मी आणि बदलं, अरे हे काय आहे, हे मूल पाण्यात कसं बाहेर येते आणि हे डुबत कसं नाही आहे आणि नाकातोंडात पाणी कसं जात नाही आहे. आणि आय एम अ गायनेकॉलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, बर्थिंग बेबीज डे इन अँड डे आउट. आणि 17 वर्षांनंतर मला हा प्रश्न पडतोय की हे काय आहे, आणि हे मला माहिती नाहीये. आणि का माहित नाहीये? माय जर्नी स्टार्टेड देअर. की बाहेरच्या जगाला या गोष्टी अवेलेबल आहेत, माहिती आहेत. आपल्या ज्या बायका आहेत, आपल्या वुमेन आहेत, आपल्या मुलीबाळी आहेत, आपल्या सुना आहेत, यांना हे का अवेलेबल नाहीये? नको का अवेलेबल असायला पाहिजे. त्यामुळे somebody has to step there ना, कोणीतरी करायला पाहिजे. म्हणून म्हणतो आम्ही दोघी वेडे आहोत. तेव्हा आणि मी जेव्हा हे शिकून आले US वरनं इन
तेव्हापासनं ही माझ्या मागे लागली आहे की आपण करूया ग, आपण करूया ग. पण ते आत्ता एव्हरीथिंग हॅज अ टाइम. त्यामुळे नाव द टाइम हॅज अराइव्ड अँड दॅट इज हाऊ इट इज कमिंग इन टू बिईंग ॲज मॉमस्टोरी. आणि वॉटर बर्थिंग बद्दल बोलायचं तर इट इज अ फार ॲडव्हान्स्ड method of birthing which India still doesn't know. It starts with a lot of pathophysiological changes in the mother and in the baby's brain in the first hour of birthing. And that is a different seminar on itself which we will do eventually. मला माहिती आहे मी करूच दे. पण water birthing is far more advanced science which the outside world knows and is backed by all the things, all the statistics, all the available things which we will make available to all our doctors who wish to know. When water birthing is an advanced thing, it is coming to India. We are going to see that we install it in India for the next generations to come. आणि इट इज द नेक्स्ट ॲडव्हान्समेंट. जसं रोबोटिक सर्जरी इज अ ॲडव्हान्समेंट टू लॅप्रोस्कोपी, एग्रीड? तसं ऑब्स्टेटिक्सचं ॲडव्हान्समेंट इज नॅचरल तर ऑब्स्टेटिक्सचं ॲडव्हान्समेंट काय त्याच्या पुढे सायन्स आहे. सायन्स इव्हॉल्विंग असलंच पाहिजे, नाहीतर ते सायन्स नाही. तेव्हा ॲडव्हान्समेंट इन ऑब्स्टेटिक्स काय असणार? तर देर इज लॉट मोर. ज्ञान, नॉलेज इज सच अ थिंग दॅट जेवढं तुम्ही एक्सप्लोर कराल तेवढं ते यू विल गेट इट. खजिना, दॅट इज व्हॉट इज नॉलेज. वी डू अवर स्पेशलायझेशन, वी डू अवर सुपर स्पेशलायझेशन आणि आपल्याला तिथे संपतं. Knowledge is not that, science is not that. It goes much beyond. And असतात काही लोक आणि आपल्यासारखी लोक जी सपोर्ट करतात, ज्यांना ते समजतं कुठेतरी. So there is a lot more to learn, but this is a game changer, boss. This is a game changer for this country. It has started here in Pune, but this is a game changer for this country. And I'm honored to be associated with this, because I know it is going to get for the generations of women to come in this country. Thank you and happy Mother's Day. I must agree. Both of them are very different, and I so loved it. The way she's focused, the way she is so she's so focused on everything that she was talking here. She was so happy about Momstory. Like ये करना है boss, बस इसके बाद कुछ नहीं, ये करना है. लेकिन very nice. Let's have a round of applause for Dr. Veda. And we all are right here, ma'am. I am sure. We all are right here to see where this is going, definitely. Well, moving on, there are last 3 awards that we would like to thank the health activists who are making sure that they provide the facilities to the underprivileged people. And now it's time to call them on stage, but to felicitate them, I would like to call our medical director, Dr. Prasad Mugrikar. Let's have a round of applause for him. Dr. Prasad Mugrikar coming up on stage for felicitating the health activists who are making sure that the underprivileged people get the facilities. Firstly, calling up on dais from the ASHA worker, Mrs. Aarti Ghume. Let's have a round of applause for Mrs. Aarti Ghume. To please accompany her. She's also from ASHA worker. And one more, Mrs. Savita Babu. Let's have a round of applause for all 3 ASHA worker ladies right here present with us.
Thank you so much, ma'am. Ma'am, रुक जाइए. Ma'am, रुक जाइए. Aarti, ma'am, please wait. All three together. Come. Come on, ladies and gentlemen, everybody present here. Let's have a very big round of applause for them. Coming up on dais, Mrs. Savita Babar. Yes, thank you so much. A picture together with all three of you. आप तीनों के साथ एक picture लेंगे. Savita ma'am, please come. Yes. And coming to the end of the function. Thank you so much. I request you to please take your seats. Like I said, coming to the end of the function, now calling up on stage for addressing the last speech, Mr. Abhinav Joshi, Cluster Head of Sahyadri Hospital, Hadapsar and Nagar Road. A bigger round of applause for him. Come on, this is the last talk. Yes, thank you. Yeah, thank you very much. So, everything which begins comes to an end with a beginning journey of Momstory. First of all, I would like to thank, it's absolutely my privilege to stand in front of you and give vote of thanks. I would like to thank all the dignitaries who are available here and have stolen their valuable Sunday, and they are available with us and making this event a success. Next, madam, I don't have words, but you are a fighter. I saw your story, and in fact, I had goosebumps when I was seeing it, and it's a really hard time for a mother who has to choose whether to deliver a baby or not. It's really a very difficult decision. Hats off to you, ma'am. I would like to thank all our doctors and Miss Sonia. You have given an excellent the question and answer session, and really it was really peppy at the end when there was a quick round for question and answers. I would like to thank all the team members, the branding team, the marketing, who have made this event a success. Last but not the least, the management. 1.5 साल पहले, मुझे आज भी याद है, हम लोग एक कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे हुए, कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि what we should do for a mother and child care, and at last this mom story is there. मुझे आज भी याद है जब मैडम के साथ हम लोग बैठे हुए थे कि मैडम इसका लोगो कैसा होना चाहिए. So the logo is definitely selected by her, where she made it very clear that I want a mom and a child. Somebody said here during this session, Dr. Ved ma'am, an excellent update about the birthing, and definitely I should say that you are absolutely different as you are associated with madam. So with this, thank you very much, and let's join for the lunch. Thank you. Thank you so much. We're coming to the end of the function now. I request the entire medical team of Momstory to please come up on the dais for a group picture. The entire team, medical team of Momstory. I don't have the list present here. I request you to please come on the dais. A very warm welcome. And after that, I request the team of the patients and the KOLs to please come up on the dais for a group picture again. You're coming to an end. This was your host Gina Doshi from LinkedIn Minds. This entire event was managed by LinkedIn Minds. We are right here present. Thank you so much. It was a real honor to share the stage with one of the most amazing experts and the leaders. This was, once again, this was your host Gina Doshi. Also, I request you to
after the photo is done, I request you to please pay attention on the screen again. There is a very small video that we want to share. Momstories also have started arranging different activities for mothers and trying to make sure that they evolve, that they grow, they improve, and a lot of different activities they've planned. So please make sure that you enroll and pay attention on the screen after the photos are done. Thank you. Lastly, let's have a very big round of applause for the entire medical team of Momstory, who's making sure that this is going to be an amazing platform. Thank you so much. Lastly, calling up on stage the special moms and the key opinion leaders. Special mom and all the key opinion leaders present here. Come on, quickly, I request everybody to please walk on the stage. Once again, correcting myself, I am your host, Reenal Doshi, signing off from Lincoln Minds. This event is managed by Lincoln Minds. Come on, all the special moms, everybody who is called on the stage to appreciate. Starting from Sonia Kunjeti, Mrs. Ananya Patil, Mrs. Pooja, Miss Rucha, Miss Anita, Miss Nutan, RJ Shruti, RJ Junita, Mrs. Rushali, Mrs. Darshana, Miss Gauri. Everybody please come up on the dais. Yes, everybody together, all the ASHA workers as well. And also calling up on dais our social media influencer Priyanka Singh. Please come up on the dais. Let's quickly take a picture. Thank you so much. Lastly, thanking everyone for sharing their special moments and special time right here with us. Thank you so much for your presence. This was a very, very big day for all of us, especially for Sahyadri hospitals and the entire medical team, and this was the best day where this Momstory, this concept could be launched. Thank you so much everyone. Once again, wishing all the mothers present here a very happy Mother's Day. Celebrate, and thank you so much for this Sunday booking out with us right here. The lunch is served outside. I request everybody to please enjoy their lunch before leaving this place. Thank you. Thank you, Gina, for a very wonderful anchoring. Thank you so much. Thank you so much.